से। लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस जो थोड़ी देर पहले 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए उन्होंने टीम इनर सर्कल पर, अब वो फॉल बैक कर कर या आप कह लें रोटेट करते करते जब आगे बढ़े हैं, एक प्लेयर को गिराया जा चुका है उनकी साइड पर। आखिरी 2 खिलाड़ी इनफैक्ट टीम ऑल्टर ईगो के साइड पर हमें सर्वाइव करते दिखाई दे रहे हैं। एंड लीजिए फ्लाइंग व्हीकल्स आएंगी, नोलबू कम फ्लाई विद मी, चीट कोड लगाया जाता है उनकी साइड से। नहीं गेम प्ले तो काफी जबरदस्त कर रहे हैं यार मुंडे। ग्रेनेड और नॉकआउट नहीं हो पाएंगे प्लेयर, लेकिन ऑल्टर ईगो के फाइट ऑन, अकेले खिलाड़ी अब रह जाएंगे। क्योंकि वो मैं देखी नहीं कल दी थर्ड मैच दी हमें दिखाई दे और रहे हैं, जिथे कितना उन्होंने गटका लगे नोलबू को पकड़ा जाएगा, गटका लगे काफी और जबरदस्त। टीम डी प्लस किया, ये भी एलिमिनेशन पॉइंट उठा लेगी बासानी। क्रिप्टॉन बहुत ज्यादा लो एचपी हो चुके हैं, यही क्रिप्टो इथों दी फॉल बैक करते दिखाई देंगे, लेट जाएंगे, पकड़े क्या जाएंगे, नहीं तुर्की दी नहीं है नहीं जाएगा बाकी आईसी जेडी आई ते पहले मैच से एलिमिनेट हो गई थी। अपॉर्चुनिटी जाते जाते ऑल्टर ईगो के आखिरी प्लेयर एलिमिनेशन पॉइंट नहीं पहला मैच जेड़ा उन्होंने चिकन डिनर कड्ढिया ही ज्यादा वो भी बचती हमें ना दिखाई दे, और क्योंकि पहला मैच रोंडो दा जमाए हुए बिल्कुल सर्कल बढ़िया जी बढ़िया। तुम सुनाओ क्या हाल चाल? रोंडो दा चिकन डिनर कड्ढे काफी तेजी से पड़ता दिखाई देगा। चल आज देखते हैं आईसी ओजी की करते हैं सैनो दूजे सैनो को भी चिकन 2 चिकन कड्ढे उन्होंने लगातार। हां जी सर्वाइवल यहां से बचकर निकलना इम्पॉसिबल है। एंड डी प्लस सही है आ फाइट था ना बढ़िया लगे ऑनर की नजर होती दिखाई देगी, लेकिन 9GG ऑन द अदर हैंड जो कि डोमिनेट करते दिखाई एपीजी दे ते रहे हैं। 9x 9जीजी एक प्लेयर नॉकड आउट है, आखिरी 2 प्लेयर्स पर वो खेल रहे हैं, लेकिन अल्फा गेमिंग उनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है इस मैच के लिए। पता उनको लग चुका है कि इनर सर्कल पहला पायदान इस मैच से एपीजी बाहर हो तीन चुका है, सालियां और स्पोर्टा अल्फा गेमिंग पीछे इस फाइट हो मैच रही है पर तो तीन अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं। जी हाँ, और दे नेड गया पूछे देख लेते एनर्जी दिखाई दे रही है प्लेयर्स के अंदर। एक अटैकिंग वो टीम की तरफ से ओपन किया जा चुका है। अल्फा गेमिंग तुम करना बिजी भी हो चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ से टीम ऑलरेडी गो एज वो भी इस मैच से एलिमिनेट हो तुम चुके बिजी हैं। हो आउटपुट साइड से टीम इन सर्कल भी ऑलरेडी मैं देखा शर्मा जाए यो हमला करते आए हैं, सो कहीं वो इस मैं मैच से फिर एलिमिनेटेड है। सो हर ही तरह से टीम अल्फा बहुत गेमिंग के हो लिए गए एक ब्रश बहुत ब्रश ही करके अच्छा कहीं सा फिर प्लेटफॉर्म है, कुछ एक बना फाइट हो सके चुका हाँ है, मुझ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सैंडविच उसके अलावा ओके एक शाइन अगर मैं सैंडविच बना बोलूँ लगे जो क्या विनर बात है है ग्रेंगल के मैच के सही लिए, हो वो गया इस लॉबी की और तरफ दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी जिम में जाना देखते है हैं यू नो क्या बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर ओ टीम अल्फा गेमिंग वहां जेन पर भी कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, कुछ सही और हो को गया कंफर्म किया जाएगा। टीम गॉड उनके जिम में प्लेयर्स जाना यहाँ है पर तो है, फिर सो पता तैयारी इसके पहले ही शुरू अलावा करने कोई पैंती और है नुकसान हाँ उठाना जी ये चाहेंगे? बात है फिलहाल कि टीम फाल्कन का टीम प्लेयर है जिन्होंने ये एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम एनर्जी करके लिखा है। कॉब्स सो डिफरेंट प्रोटीन टीम्स के हाथों और कुछ अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट करने यहाँ पर पैंदा अपने है प्लेयर्स को भी डिसिप्लिन गंवाती च हुई रहने दिखाई पैंदा दी जिम जाएगी, और एक एक तो करके अब ये तीसरा खिलाड़ी था जो कि इस मैच से टीम का एलिमिनेट किया जा चुका है। कुछ ये ऐसी बात है सूरत कि हाल टीम गॉड के लिए भी, जिनका दूसरा प्लेयर फिलहाल इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगा। सो जो तेजी है उस मैच में आ रही है, टीम एलिमिनेशन हमें होते हुए दिखाई दिए हैं कुछ अर्सा पहले, अब जाके प्लेयर्स एलिमिनेशन हो रहे हैं। सोलो हमको सर्वाइव करते हुए दिखाई चलो देंगे, कुछ देखते हैं डुओज आज हैं जिनमें हमें 2 नाम हैं जो कि इस मैच में डुओ के तौर पर सर्वाइव करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। सो हर चीज़ फिलहाल चल रही है, लेकिन डी प्लस किया उनके गिर्द घेरा तंग है, ढूंढ रहे हैं डी प्लस किया किसी एचपीजी के कहीं उनको जाए पना मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से जिस जगह पर वो गए हैं, जिस हाइट से उनको देखा जा सकता है, जो उनकी बैक साइड है या उनकी फ्रंट साइड आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे नाम हैं। 2 से 3 टीमें हैं जो कि ऑलरेडी इंतजार कर रही है कि कोई टीम आए और उनको हम यहाँ पर इस मैच से एलिमिनेट भी करके जाएं। लेकिन टीम लूप्स वर्सेस टीम जीएस जेन जी, इनफैक्ट कौन यहाँ पर बाजी मारेगा, कौन जाएगा इस मैच से लॉबी की जानिब? लेट्स फाइंड आउट। रेटो बॉय उन्होंने कोशिश की, बैक स्टेप किया गया प्ले की तरफ से कि जेन जी को इस मैच से जो है वो एक और हमें धचका जो देते हुए दिखाई दे। धामी वो प्लेयर थे, लेकिन खुशकिस्मती रही धामी की कि वो बच गए, लेकिन रैटो बॉय नहीं बच पाएंगे, और जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं उनको पकड़ लिया जाएगा और टीम जेनजी उनको इस मैच से एलिमिनेट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जीएस वर्सेस टीम लूप्स ये भी खैर फाइट हो जाती है, और बैक टू बैक फाइट्स में इनफैक्ट टीम फाल्कन रहेगी जिनकी तरफ से फाइट ली जा रही है। लेकिन क्या चल रहा है, गाड़ियां आ रही है, प्लेयर टॉप साइड पे भी मौजूद है, और थर्ड पार्टी कर दी जाती है टीम आईजी की तरफ से, जिन्होंने शायद उठा पाएंगे शायद आखिरी एलिमिनेशन पॉइंट है वो आतंकी कंफर्म करते हैं। ओह माय गुडनेस, ये फ्री के एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जा सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली क्रॉसर नहीं बन पा रहा था। बाकी के नॉकआउट प्लेयर्स को शायद वो देख ना पाए, लेकिन 9GG डोमिनेटर्स पिछले 2 गेम्स के इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि टॉप स्पॉट्स में से सिर्फ एक ही नाम है जिसका ये मैच बहुत ही शानदार चल रहा है, टीम अल्फा गेमिंग। उसके अलावा और कोई अपनी जगह इस मैच के अंदर उस तरह से ना बना पाया, लेकिन अल्फा गेमिंग अभी फिलहाल के लिए 7 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स पर जा चुकी है, और अल्फा गेमिंग अब सिर्फ और सिर्फ चंद
ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ 2 ਚ टीम इंडिया टीम पाकिस्तान है की टीम अल्फा गेमिंग इस मैच से प्लेसमेंट उठाकर भी निकाल कर लेकर जा सकती है, लेकिन अल्फा गेमिंग अभी फिलहाल के लिए चारों के चारों शर्मा जी हाँ होनी है एलिमिनेशन पॉइंट्स उनकी साइड ग्रुप बनाना बाकी स्टेज विच रहेंगे, मतलब लेकिन अल्फा गेमिंग ग्रुप शानदार सारे ने लुक मैच का दिखाते हैं शायद सीक्रेट के एतराफ करने की कोशिश है। सीक्रेट को पीछे से 3 देख दिन रहा है होना ना क्योंकि पीछे ग्रुप से मैच जेंजी अगर अपने मैं स्कोप्स फाइट खोलते हैं इस फाइट जाने का की टीम सीक्रेट के डिफरेंस देखो प्लेयर्स ना को दिया नुकसान जेड़ा उठाना टीएस पड़ेगा, ते लेकिन वो अल्फा जन गेमिंग ये सारे पिकाली लाने ना कोशिश है उनकी कि देख लो रिलीज दोनों की नु लड़ाई एक को दूजे तो कंफर्म पिट किया तो जाए, क्योंकि सिर्फ बाहर निकल कर अगर कवर फाइट किते तो लेंगे तो उन्होंने अल्फा को भी अंदाजा है ओदा कि इस हमारे मौका ऊपर का ही कवर है ट्रेड हो जाएगी, लेकिन सीक्रेट यहाँ से जान बचा ओपन करके प्रॉपर कैसे निकलेंगे। वहीकल का कवर लेने की कोशिश थी, ग्रेनेड के फटने से वहीकल आगे चला जाता है, प्लेयर्स को वापस वहीकल की कवर में आना पड़ेगा, लेकिन खैर स्मोक्स का इस्तेमाल अच्छा किया जा रहा है। वहीं पर डॉक अपनी हेलो पोजीशन चेंज हमजे करके क्या हाल चाल पॉसिबली शायद कैसा एक है फ्लैंक एंगल ले लिया जा चुका है उनकी साइड से, बढ़िया लेकिन बढ़िया। अल्फाज की साइड पर बढ़िया जियोल को चाहिए पकड़ा जाता स्क्रीन है। लग रही वहीं है पर तेन ऊपर रिज पर से टीम आईकू एक नहीं ओरांगुटान वो भी अपने लिए एलिमिनेशन पॉइंट्स क्यों उठाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। दिखाई देती एक तरफ अच्छा से स्प्लिट है मेरी ओरांगुटान्स का, से बस तेरे को स्क्रीन नॉकआउट दिखाई दे नहीं रही देना है। ये स्प्लिट इस तरह के सर्कल में नहीं काम कर सकता है, लेकिन सर्कल अनफॉर्चुनेटली साथ नहीं निभाएगा। ओरांगुटान्स को आगे बढ़ना पड़ेगा। एकेओपी अपनी जगह बना लेंगे सर्कल में, लेकिन अल्फा गेमिंग अभी तक के लिए जियोल को रिवाइवल आवाज आ नहीं रही है दिया मेरी? गया है। रिवाइवल चल जरूर रहा है, मुकम्मल भी हो जाएगा। स्टॉप हाँ शेयरिंग दिखाई दे रही है, दि- शेयर यूज अरे करें क्लोज कर दिया आपने। हो जाएगी अभी दोबारा लेकिन सीक्रेट उनकी दिखाई दे रही जान है की अब बख्शिश क्या अल्फा गेमिंग करेगी या पहले दिखाई अल्फा दे रही थी गेमिंग को अब नहीं। एलिमिनेट करेंगे टीम सीक्रेट के खिलाड़ी। लग तो बहुत ही मुश्किल रहा है, लेकिन टीम आईको एक्स ओरांगुटान उनके बैकयार्ड में कुछ इस तरह के सोलोज और डुओ सर्वाइव अब कर देख रहे लो हैं जो कि दिक्कतें बहुत ज्यादा बना सकते हैं। हाँ अब दिखाई दे रही। अब सही है हाँ अब दिखाई दे रही। तो फिर वही कौन चिकन कड्डूगी आज फिर केडी टीम चिकन कड्डूगी गाइस सी ओ स्नाइपर रोजी मैन एडवांटेज सब कुछ है, गाड़ी में बैठे बैठे मुझे तो हेडशॉट्स रोज ही फिर किए लगता है। जाते हैं। बहुत ही ओ ज्यादा लो क्या एचपी बात किया है था नहीं आज खिलाड़ी को, की लेकिन टीम फॉल बहुत बैक कर जबरदस्त जाएंगे खेली है टीम गोट के खिलाड़ी। नाइस मैं तो भाई कुछ भी हो जाए मैं इंडिया की नाइस टीम को ही जर्सी सपोर्ट फिर करता से हूँ। आपको किल ओए फीड में ओए चलता हुआ ओए क्या दिखाई देगा, बात बट है ये अल्फा रहा है भाई गेमिंग पहला किसी पाकिस्तानी को है नहीं जो छोड़ इंडिया रही। की टीम इनफैक्ट को कोई सपोर्ट भी करता टीम है चाहे वो दूर है क्या चाहे बोले वो तो ले करीब गए है, दो एक डेढ़ चुना जाएगा और दो एक ले ऑप्शन गए चुना डेढ़ जाएगा नाल जो कि गया स्प्लिट के दूजा सर्कल भी में दो खिलाड़ियों को गिराते हुए आई थिंक दिखाई देंगे। इनफैक्ट दूसरे कॉल में इन्होंने तीजा गिरा भी दिया तेन था, नोक लेकिन प्लेयर बच जाते हैं। इट विल बी डॉक वर्सेस डिफेंड ओह ऊपर वर्सेस चो जियोल नेट है, जो देख कि कितना उनके आले जनरल दुआले डेविन डॉक आपको ऑब्वियसली दूसरी साइड पर दिखाई देते हैं टीम परफेक्ट डेट टेक अल्फा रहे हैं। गेमिंग की जानिब, लेकिन टीम सीक्रेट उनके दो प्लेयर्स अब नॉकआउट किए जा चुके हैं। रिपर्स उनको भी गिराया तीन जाएगा एंड खत्म एक तो नॉक लास्ट सीक्रेट है फिनिश वर्सेस हो गया। टीम अल्फा गेमिंग टीएस रह गया ऑपोजिट से टीएस होते हुए जुक्की रह गया एलिमिनेशन सिर्फ पॉइंट्स हैं वो भी हेलो कंफर्म ब्रदर क्या किया हाल चाल जाएगा, कैसे हो लेकिन टीम हेलो अल्फा जी गेमिंग क्या प्लेयर हाल ऑन चाल टॉप कैसे हो और वो वेलकम श्योर जी चाहेंगे कि जल्द से जल्द टीम सीक्रेट को इस मैच से बाहर किया जाए। एंड पूरी सीक्रेट पूरी दी पूरी ओह टीम है नाइस मेरे निकल पाएंगे गन्नेड, और यार प्लेयर ऑफ द ग्रेनेड नाल ही नाइस ले गया मैच भैंस गन्नेड इस यार। मैच में देखने को मिल रहा था। एक ग्रेनेड नाल ही शानदार ले गया कॉल सारे जाएगा, शॉट सीक्रेट टीम ने आउट इस मैच सो में पहले अपनी 2 जी पॉइंट तो ब्रेक निकाल शॉट पाए आउट हैं। यू एलिमिनेशन का 2 पॉइंट्स उनको मिल जाएंगे। प्लेसमेंट के इन टोटल 3 पॉइंट्स निकाले टीम इंडिया टोटल की इस 5 मैच से टीम भी रह गए 14 बंदे रह गए टीम वापस सीक्रेट ने। और नंबर 15 अभी भी वो नंबर रहेगा जहां पर टीम ने फिनिश किया इस मैच के बाद भी। आई जी हाँ ये बिल्कुल, पूरी लेकिन वहीं टीम हो पर जी पूरी ओरांगुटान्स टीम को भैया आकर इधर के अग्रेसिव वो हो रहे हैं एंड ये चीज़ उनके लिए अच्छी भी जा एलिमिनेशन रही है। 6 6 एलिमिनेशन एलिमिनेशन कितने 18 पॉइंट्स हैं, पॉइंट लेकिन विज को अभी तक के लिए रिवाइवल नाइस नहीं दिया गया है। आतंकी गए आगे, लेकिन वुल्व्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स जिस जगह पर आ चुके हैं वोल्स अब शायद वो रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा। कोशिश नहीं इनिश करनी अब बिल्कुल भी, एंडी एक तो कोशिश आईजी करने रह से गया पहले ही प्लेयर का ट्रेनर एलिमिनेशन पॉइंट कोची भी एक उठा लिया गया जाता है। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर टीम वुल्व्स अपने चारों के चारों प्लेयर्स पर हाँ, खेलती दिखाई दे रही है, लेकिन आईकू एक्स ओरांगुटान ये मैच उनका साबित हो सकता था, लेकिन अब उनके बैकयार्ड में डी प्लस की आ चुकी है। उनके बिल्कुल सामने टीम नहीं वुल्व्स ई नहीं भाई स्पोर्ट्स के क्यों 4 बोलना मेरी खिलाड़ी जान कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे कर कर हेलो जी क्या हाल मजीद कुछ चाल एलिमिनेशन कैसे हो पॉइंट्स कैश आउट किए जाएं टीम आईको एक्स क्या ओरांगुटान के बहुत खिलाड़ियों को, बढ़िया लेकिन जबरदस्त आप बताओ आतंकी कैसे वो हो स्कोप इन करेंगे। वुल्व्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर का व्हीकल ट्रेस उस तरह से नहीं कर पाते। व्हीकल को तो ट्रेस किया, प्लेयर को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। 6 के 6 ही चल एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, लेकिन आईको हाईएस्ट एक्स एलिमिनेशन इस ओरांगुटान वक्त सर्कल 11 का टीम है इंतजार कर रहे एपीजी हैं। की जितना 11 अच्छा एलिमिनेशन स्प्लिट होगा कितने उतना ज्यादा बेहतर 34 साबित हो पॉइंट तो सकता सिर्फ है, लेकिन एलिमिनेशन बीके देना की दे चिप्स इंतजार कर रहे थे चेक उस करो सही मौके का जिस पर वो बैक स्टैप करें आईको एक्स टीम नंबर ओरांगुटान 3 को, था लेकिन बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए ओरांगुटान्स के खिलाड़ी। वहीं पर अल्फा गेमिंग 11 34 सिर्फ एलिमिनेशन पॉइंट्स पॉइंट होना पर दे ये एलिमिनेशन दे सीन हैं जो सो रहा था शायद तो गॉन्टलेट विद में चिकन अब वो डिनर जा दिया चुका होगा है, और अल्फा गेमिंग आपको इस मैच के इख्तिताम के ऊपर पहले पायदान पर भी जाती दिखाई स्नाइपर दे सकती है अगर तो वो चिकन डिनर उठा ले। अभी भी काफी एलिमिनेशन पॉइंट्स इस पूरे लॉबी में से कंफर्म किए जा सकते हैं, क्या टीम लेकिन जड़ी टीम सर्कल और रांगुटान्स के खाते में एपीजी है तेरे नाजरीन को जोन टू आता जोन है। खेल दिया बैक यार्ड्स पर रहते डी प्लस किया के बुल्स चिप्स ओप्स अब बहुत बड़ी खतरे
की घंटी बज चुके हैं टीम आई को एक्सुरांग किया के लिए किसी भी लम्हे
बुलेट्स किया। आएंगी। ओए वैन अभी जो तो 1 रैंगू एचपी, टैंक के कोई भी एक प्लेयर बाहर मिल गए थे। 1 एचपी ज्यादा बैंडेज है ये गलियां कक बनिया कर 5 बैंडेज आ उनके दामी खैर बड़े खुशकिस्मत रहे कि इस मौके पर जो नेड 5 उनके वक्त बैंडेज आ गलियां रह गया थे ऑलमोस्ट उनको एलिमिनेट कर जो दिया था। रिंग तक सिचुएशन पहुंच देख जाते हैं लेकिन गया आगे अभी। उनकी ये पूरे भी यूज गया में आएंगे और टीम डी प्लस किया के सीएचपीजी गोलियां जिनके देखो अकेले परफेक्ट ओजी। खिलाड़ी मार रहे हैं, काफी मतलब दिनों एक से हमें कोई रिवाइवल गोलियां नहीं चलते वो हुए हो रही दिखाई दे ये रहे हैं। बहुत लगता है जबरदस्त है कि यार। डी प्लस की अब गई इस मैच से ओजी दे सर्वाइवल की 2 रह कोई गए यार। उम्मीद नहीं है। टीम नंबर 5 शेयर भी 6 तक एलिमिनेशन ही है ना महदूद दे रहेगी लेकिन स्टिल 12 डी पॉइंट हो प्लस गया भी वो टॉप टोटल 5 के अंदर 5 आए टीमां हैं। बची हैं, टॉप 12 अब बंदे हमारी रह बारी गए। बारी बारी कब एलिमिनेशन आएगी? पॉइंट्स हैं इनफैक्ट उनको भी कंफर्म किया जा रहा है और टीम ओजी डेफिनेटली दे आर वेटिंग कि फिलहाल उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी जगह पे मिल पाए। लेकिन टॉप ओह पोजीशन इस नाइस। सीएचपीजी और सीएचपीजी जबरदस्त जिस है तरह यार। से शॉट गए फायर चिप्स, कर गए रहे हैं, चिप्स गए। जो इनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर लग रही है वो बहुत ही शानदार रहेगी। लेकिन यहाँ ओए देखिए होए होए खिलाड़ियों होए को आरू जो कि ओ दामी भैन खिलाड़ी चो बन चुके कितना हैं। आरू वो गंदा कर रहे ने। लुक एट दिस गाय गोइंग ओजी इनटू द आरू गेम। वो डी गंदा कर प्लस रहे एंड ने, सीएचपीजी समझ में ही नहीं आने देते आरू को। बहुत और गंदा आरू जो कर कि रहे आ ने। रहे थे उनको बिल्कुल आने नहीं दिया जाता है, उनको इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। इट्स 1-3 शिट नाउ। टीम जो ओजी जो कि एक खिलाड़ी पर रह शर्मा जी जाएगी। टीम आज के डी मैच प्लस स्टार्ट टीम हो गया। उनके नहीं पास आज का काफी मैच नहीं दूर तक स्टार्ट हुआ अभी बड़े तक, खिलाड़ी है लेकिन जिस तरह से अभी खिलाड़ी स्टार्ट फाइट होने करते वाला है हैं थोड़ी देर ऐसे तक। ये खिलाड़ी तो के कल के साथ मैच फिलहाल पहुंचते देख हैं। रहे हैं हम। लग रहा है कि अपने ही आप में पूरा स्क्वाड है ये खिलाड़ी। तो आज का मैच स्टार्ट होने वाला है, जी हाँ, थोड़ी देर लेकिन में डी स्टार्ट हो प्लस जाएगा। किया के चिप्स उनको चाहिए मजीद ग्रेनेड्स, मजीद यूटिलिटीज एंड लीजिए 2 ग्रेनेड्स उठाए भी जाते हैं। डी प्लस किया के चिप्स इनफैक्ट यस सॉरी। लेकिन वहीं पर जिंजी इस मैच से बाहर हो जाती है। चिप्स से मुझे वो चिप्स मांग रहे वाली मीम याद आ जाती है। लेकिन खैर 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स सो लेकर और भाई रैंगूटैन जिस फाइट से मैच बाहर हो स्टार्ट होने जाता वाला है, है। एक बार चेक करते हैं हम। देखते हैं भाई मैच स्टार्ट हुआ नहीं अभी तक। मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ यार, अभी तक नहीं मैच स्टार्ट हुआ। ओरंगुटैन्स के साथ बाकी आई फील सैड फॉर देम और मुझे भी अभी ऐसा है लग रहा है कि टाइम यार थोड़ा, वो कुदरत का थोड़े निज़ाम टाइम जो है तक ना स्टार्ट वो हो जाएगा। चाह नहीं रहा कि ओरंगुटैन्स चिकन डिनर करे। हालांकि ये मैच एपीजी अधूरा था। चिप्स अगर मौजूद ना जेड्यूल, होते तो आई वुड से उन्होंने बहुत हेलो अच्छे तरीके नगरे से मेरी मैच जान, क्या विन हाल उठा चाल लिया था। कैसा? अल्फा गेमिंग की साइड के ऊपर एक प्लेयर को छोड़ा गया था, वहीं पर चिप्स जाकर आतंकी को 16 सबसे पहले नेड एलिमिनेट करते हैं। पैंचो, सो आई 16 फील नेड। सैड फॉर देम काइंड ऑफ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चिप्स पूरी को टीम देखते हैं 16 कि वो नेड लेके सोलो बैठी हुई है। डोमिनेशन कहां ये तक गया, लेकर जा पाएंगे। ये ओके भी यूटिलिटी गया। कहानी खत्म कर सकता था। बाकी रिवर्स अभी फिलहाल के लिए बहुत एक स्लिवर ऑफ एक और एनएचपी को नेड लेकर आ जाएंगे। वापस से फॉलोइंग यूटिलिटी नहीं करेगा कंफर्म स्मोक, अभी के लिए ओके ये गया। एलिमिनेशन पॉइंट। एक लेकिन अल्फा एलिमिनेशन और हो गेमिंग गया, दो वो टीम अपने 11 को 7। 13 में तब्दील जरूर कर ओजी भी चुके हैं टीम इस खत्म है। सूरत हाल में। वहीं पर फाइनली चिप्स को लास्ट एलिमिनेट कर दिया 3v4, जाता है। 3 एलिमिनेशन 3v4, पॉइंट्स उन्होंने 13 उठाए नेड पड़े हैं जिसमें से इन्होंने। 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो वुल्फ वाले उन्होंने ने 13 ओरंगुटैन्स नेड के ऊपर रखे हैं। कंफर्म किए। लेकिन वुल्जी स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम 2 दिन वैसे से जो बना आज देंगे बहुत लास्ट ही जोन में, फिजिकल लग रेड रहे हैं। जोन। वो इस मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं चिकन डिनर के लिए। लेकिन फर्क बहुत है दोनों में। एक के पास रीजनल डोमिनेशन है, एक के पास अच्छी डोमिनेशन जरूर होगी लेकिन उतना एक्सपीरियंस उनके पास शायद मौजूद ना होगा। लेकिन अल्फा गेमिंग का चिकन बकी डिनर ना क्या देखो फिर ने भी मैच इन कितने जा सारी गए चीजों को वो मद्देनजर लबन दिया रखते हुए कटीना वुल्स की स्पोर्ट्स जगह को बढ़िया लेकर होल्ड क्या चल करन दी। पाएगी। 14 ये ग्रेनेड्स बढ़िया हैं, होल्ड कर गया। 11 लगता स्मोक है हैं कौन वुल्स स्पोर्ट्स के पास। कौन वहीं पर जीतना अल्फा चाहिए? के पास कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही यूटिलिटी वुल्फ मौजूद है। जीतना चाहिए 2 क्योंकि स्टन इनके ग्रेनेड्स पास उनके भाई पास हैं लेकिन वो तो 3v4 है, काम तो उस फिर तरह से भाई शायद ना कर 3 वाले पाएंगे। जीतने लेकिन चाहिए अल्फा भाई। गेमिंग अभी फिलहाल के लिए मैंने ज्यादा नहीं देखा एरिया था कल कंट्रोल मिस किया अपने था ही मैच। खाते में लेकर जाना चाहते हैं। वुल्स स्पोर्ट्स वहीं पर अपने व्हीकल्स के अंदर बैठेंगे। मैन एडवांटेज एक प्लेयर का वुल्स स्पोर्ट्स के पास कम जरूर है। लेकिन अल्फा गेमिंग अपने आप को बिखेर लिया जा चुका है इस पूरे प्ले एरिया पर। हर एक प्लेयर जो एक पूरा जोन डिफरेंट होल्ड एंगल कर होल्ड देना करता लग गया। दिखाई दे रहा है। और ये देखिए किस तरह से एक दीवार बना ली जाएगी वुल्स स्पोर्ट्स के सामने लीनियर फॉर्मेशन में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वुल्स स्पोर्ट्स एक साइड से उनको शुरू करना पड़ेगा अगर वो नॉकआउट्स निकालना चाहते हैं। लेकिन नॉकआउट निकालना वही तो सबसे बड़ी चीज है जो अल्फा गेमिंग इजाजत नहीं दे रही। नेट जोन ते ले दे तेरा यूटिलिटी कितने काफी लाके देने ज्यादा ब्याज करीब चला आ नहीं। जाते हैं। वुल्स स्पोर्ट्स के प्लेयर बिल्कुल सामने है मौजूद एंड लीजिए एक नॉक खड़े लग गया, होकर वुल्फ पहला वाले ने एक नॉकआउट लग लिया गया। जाएगा। और अब कहानी खत्म है। वुल्स स्पोर्ट्स कौन चिकन नहीं ले डिनर? पाएगी शायद अब अल्फा को इस मैच के चिकन डिनर से। तेरा ने 14 एलिमिनेशन टोटल पहले ही कर और रखे हैं। टीम अल्फा गेमिंग ऑब्वियसली अब वो थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं कि इस मैच का विनर विनर सेकंड डिनर बली कंफर्म बली के किया चुप जाए। बैठे। लेकिन वुल्व्स हाँ हाँ, इससे मैं देख पहले रहा कुछ हूँ। जो नेड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और एक नेड्स आएगा। लेकिन इस दौरान टीम अल्फा गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं अभी आगे यार बढ़ते हुए नीड दिखाई मैं देंगे। लेकिन चूमते जैसे लागे जैसे दूजा प्लेयर्स आगे कितने बढ़ते हैं सुना आई में। थिंक अच्छा डिसीजन के प्लेयर स्प्रेड में हो गया। अदरवाइज लॉक अगर इकट्ठे रहते तो शायद यहाँ पर जो मौका नूक मिल नहीं जाता। है, लेकिन डॉक वो फिर से बच जाएंगे। उनके ऊपर ये दूसरा ग्रेनेड था जो कि आता दो हुआ के दिखाई मैच दिया। नूक लेकिन नहीं टीम है। अल्फा गेमिंग वो गिर नहीं रही है। टीम वुल्व्स उनके खिलाड़ी बच नहीं रहे हैं। लेकिन डॉरिन इस दफा उठेंगे। ज़ियोल उनको पकड़ा जाता है। राइट साइड पे कूप्स जो कि लो एचपी किए जा चुके हैं। ही वाज सो क्लोज कि वो भी हमें नॉकआउट ओह, निकालते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद बस टीम बस इतने अल्फा बस नेड बस। क्या गेमिंग कर रहे हैं? फर्स्ट एड लगा रहे हैं। कूप्स उनको
को आगे बढ़ना है, लेकिन जोन का डिसएडवांटेज रहेगा और एपीजी टॉप ये फाइट विन ला कर गया सकते हैं, विन करते भी एपीजी हैं टॉप टीम ला अल्फा गया गेमिंग इज नाउ सो खत्म क्लोज टू चिकन डिनर चिकन गाइस। ला और गया फाइनली मैच का विनर विद एपीजी चिकन वाले डिनर क्या कंफर्म किया ब्लड जाएगा और इट विल बी टीम जबरदस्त। अल्फा बहुत गेमिंग जबरदस्त जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया इससे पहले इरेंगल की मैप पर इन चाइनीज द गॉट चाइनीज टीम थी स्टेज, लेकिन ये कोरियन मैच ना सिर्फ उनका एक विनर विद कोरियन। चिकन डिनर माय मैच बनता है, गॉड बल्कि जो डोमिनेशन है वो आपको दिखाई देती है। आई यार बिलीव 15 प्लस जो एलिमिनेशंस हैं वो बढ़िया। टीम ने इस ओह मैच में माय कंफर्म गुडनेस किए हैं। और एक चीज और जो मैं फिलहाल देख रहा था कि इन्होंने इससे पहले इनफैक्ट जो इरेंगल की हाईएस्ट पॉइंट्स निकाले थे वो 11 थे, और इससे ज्यादातर भी इनके इस मैच के जस्ट एलिमिनेशन एग्जैक्टली नंबर्स हैं। टोटल वही कितने बात पॉइंट है लगे इनके हैं अपना भी प्लेसमेंट पॉइंट्स का। जबरदस्त है हम दूसरा मैच देख रहे हैं ज़्यादा ओवर कमिट नहीं करेंगे। अंदाज़ा उनको भी हो चुका था कि मैंने बहुत हद तक लो एचपी आईसी कर दिया है, 48 पॉइंट है लेकिन ये वो एपीजी स्टेज 48 है, पॉइंट वो कर ले देखा टाइम एक है मैच नहीं जीता जहाँ पर आप उस तो अकेले बाद नहीं रह 48 पॉइंट सकते। तो बंद चल गई है अकेले आपको बिल्कुल भी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और बहुत अच्छा किया गया। आरसी के प्लेयर वहाँ से कम जबरदस्त है बैक करते हैं। वहीं पर अल्फा गेमिंग इस बार टीम जीएस आपको अभी तक के लिए तो कोई भी ड्रॉप क्लास लेती नहीं दिखाई दी है। जिस तरह से गॉन्टलेट के अंदर एक दो बारी जीएस जैन आई भी थी खिला अल्फा गया गेमिंग एक को एलिमिनेट करने के लिए, एंड बाय द वे वो ड्रॉप क्लैश का स्कोर 1-1 हो चुका है गॉन्टलेट के अंदर, जीएस वर्सेस अल्फा का। लेकिन गोट यहाँ जाएं या उधर जाएं, मुख्तलिफ टीमों को अपने 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स दे दिए हैं उन्होंने। जी हाँ, और फिलहाल कोई फाइट नहीं अनफॉर्चुनेटली देखने में लास्ट जोन दे रहे हैं हम भी कि सामने कौन मौजूद रहेगा, लेकिन फाइट से अल्फा देख रहे गेमिंग हैं उसके उनके बिल्कुल साथ से पास से जो है वो जोल के 3 प्लेयर्स जा रहे हैं, कूप्स जा रहे हैं, डॉरिन है, लेकिन रास्ते में एक और ये टीम आ है जाएगी एंड सामने सी गॉड was not ओजी impacted from the side of team एपीजी आईकू। उनको देखा जाता है वोल्फ और उन्होंने भी देख लिया था इन 3 प्लेयर्स को, 3 गाड़ियों को फॉरेन पीछे जाएंगे और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है टीम ओजी को भी, क्योंकि अभी आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पिछला ही मैच जिसमें थोड़ा धचका लगा था और प्लेयर्स तब भी उन्होंने मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा ओजी पीछे रह ऑन गए थे। लेकिन टॉप दिस टाइम ओए अराउंड होए अल्फा होए गेमिंग अपने रास्ते ओजी आईसी एंड और ओजी आगे ऑन बढ़ती हुई भी टॉप है, भाई लेकिन थोड़ी देर में हमें दिखाई दे जाएगी जरूर कि भाई सही कबार जरूर कॉम्प्रोमाइज स्टे इनफैक्ट जो वो करते अरे हुए थे ओजी दिखेंगे। वाला ने तो टीम फिर कूद पै गया आईक्यू एक जगह से निकले, दो दूसरी जगह फंस एलिमिनेशन जाएंगे और दूसरा टीम नॉक देता इंटेलिजेंट ने डिफेंस एक प्लेयर को तो उन्होंने नॉक फिनिश एलिमिनेट चालू किया और शिट उसके बाद उन्होंने बोला नीचो कि नहीं यार दूसरे प्लेयर शिट को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड इट विल बी आरू जो कि अब इस मैच से बाहर हो चुके हैं। एक बड़ा अपसेट मैच के अर्ली स्टेज पर ही होता हुआ टीम ओजी के लिए, लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस जिस तरह से इनकी फॉर्म चल रही है, खासतौर पे जो एरेंगल का ये दो मैच रह गया खेल ना रहे हैं, दाद देना पड़ेगा इनको। दूसरा मैच था जिसमें इस टीम ने डोमिनेट करके दिखाया, उसके बाद अब ये मैच है जहां पर हो सकता है वंस अगेन कि आपको फिर गोट से दे टीम जो है भी वो 10 एलिमिनेट हो ओजी गया के बीच भाई से होते हुए दिखाई दे जाए। लास्ट लेट्स रह सी, गया क्योंकि एरेंगल का ये आज के दिन का आखिरी मैच है, लेकिन आईकू के 2 रिप्लेस रह चुके हैं, आईक्यूपी उनमें फिलहाल एकेओपी में दिखाई देंगे। टीम के सबसे बेहतरीन जो प्लेयर हैं उनमें एकेओपी का नाम शुमार होता है। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी है जो कि इनके साथ रहेंगे। सो कुल मिलाकर ये 2 का नंबर है, लेकिन टीम त्याम्बा जो कि इनके पास टाइटन रहेगी, जो माइल्स इनके नेबरहुड में है, उनके पास पूरे का पूरा स्क्वाड है और ये नंबर डिसएडवांटेज है। टीम लूप्स को भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि बिल्कुल वो भी करीब हैं। सो 2 तरफ से टीम ओजी अभी के लिए घिरते हुए, टीम इनर सर्कल उनसे थोड़ा हटकर टीम अल्फा गेमिंग भी है। अल्फा गेमिंग के अपफ्रंट टीम सीक्रेट आपको दिखाई दे जाएगी, और क्योंकि एक डिफरेंट सर्कल है हमें इस दफ़ा लिपोव का साइड देखने को मिल रही है। सो इससे पहले जो इरेंगल के मैचेस रहे हैं उनसे बिल्कुल आपको अपोजिट ही एक्सपेक्टेशंस होंगी जी कि इस मैच का में जो रिजल्ट है वो बनता हुआ दिखाई दे। लास्ट टाइम अराउंड हमने गाटका के आसपास जो है वो मैच का एंड होते हुए देखा था, लेकिन दिस टाइम क्योंकि एक डिफरेंट लास्ट जगह 2 है, से हमारा सिर्फ ईस्टर्न एज है। सो यस, वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट्स में भी तब्दीलियाँ आएंगी। एपीजी कोशिश कर रहे थे लेकिन फिलहाल कामयाबी नहीं मिल पा रही। जी हाँ बिल्कुल। एंड वहीं पर टीम गोट ऑन दी अदर हैंड रोटेट करते दिखाई दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेट रहे इस मैच में आखिरी प्लेयर वेरेनिक रह चुके हैं, लेकिन अल्फा गेमिंग पहला और दूसरा स्पॉट एक बारी फिर से आमना सामना होता है। अल्फाज की साइड से इनर सर्कल के एक प्लेयर को गिराया गया है, लेकिन इनर सर्कल जिस पोजीशन पर है बैकस्टैप से अभी फिलहाल के लिए क्लियर है, अनलेस आ एंड जाओ अनटिल गाइस, किसी ਤੁਹਾਨੂੰ जीएस के सैंडविच प्लेयर खिलाइए। आइकन स्पॉट करते करते या स्काउट करते करते आ जाए। लेकिन रोटेशंस शानदार दिखाई जा रही हैं इस मैच में। शुक्रिया एंड शुक्रिया प्रोटेक्शन पाजी अल्फाज की शुक्रिया। तरफ से, आईसी की तरफ से या अगर सीक्रेट होता की तो तरफ मैं से पक्का बहुत खाता अच्छी प्ले थी सैंडविच। सर्कल की। एंड सर्कल बिल्कुल ठीक वही शिफ्ट लेकर जाता वेरी है वेरी जैमी। जिसकी बुनियाद पर ये रोटेशंस की गई थी आपने टीम गोट बनाया की है ना साइड से। लेकिन अभी अपने फिलहाल नहीं हाथों टीम से, बनाया। मजीद कुछ ओजी चेंजेस ऑन इंतजाम शादीशुदा करते वाले हुए टॉप हाथों आपको से। दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ओरांगुटान्स वो भी रोटेट कर रहे हैं। ओरांगुटान्स के बिल्कुल बगल में फाल्कन्स के कुछ खिलाड़ी वली मौजूद पाजी हैं आपकी जो क्या राय ओरांगुटान्स है जिस रिज पर जा रहे हैं वो कौन सी? बहुत शानदार रिज उनके लिए साबित हो ओजी सकता के है। बारे अच्छी में? रोटेशंस कहूंगा।
कि बेशतर टीमों की तरफ से ओजी हमें वाले विकेट यार दिखाई दे पता रहे हैं। क्या है, लेकिन एक ऑल्टर होता है ना, इक्वालिस और टीम जेंजी आमना सामना उनके करते पास हुए थोड़ा मानसून के अतराफ दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के जो प्लेयर है ना, उनके पास आउटस्कर्ट्स में जो वो वाला कॉम्पाउंड्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है जो क्रॉसिंग्स, बाकी टीमों के लिपोवका के पास और है। मैंशन से जो निकलते हैं, वजह दे, अच्छा वहां पर ये फाइट क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के प्लेयरों के साथ ही खेलते हैं बीजीएमआई में। अच्छा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान वाले खेलते हैं, अरबी लॉबी आती है, या फिर अल्टीमेट में डिफरेंस पैंदा ऊपर बहुत ज्यादा। जाके प्ले, ऐसा नहीं कि प्लेयर उधर बुरे हैं, लेकिन भाई नहीं डिफरेंस फर्क तो मतलब पैंदा है। ना हमारे एक जैसे वो वर्ड बीजीएमआई लेवल में ते चीज। अरबी अरबी नहीं आते, हम्म। हाँ जी, एक वर्ड लेवल जैसे ते कि चीज। बीजीएमआई। हाँ वो नहीं हाँ आता हाँ, कोई बोले भी, बोले। वो नहीं आता कोई भी, वो सिर्फ तो इंडियंस ही जैसे होते कोई हैं। अच्छा प्लेयर नहीं आता, इंडियंस ही होते हैं, और उसमें अरबी नहीं आते, चाइनीज नहीं आते, कोरियाई नहीं आते, मतलब जैसे हाँ। हमारे पबजी में कितने अजीब अजीब लोग आते हैं। हम्म, तो हम देखो कैसे सरवाइव करके चिकन निकालते हैं, तो उन्होंने वही वो चीज तो, मतलब फेस नहीं किया। वही चीज तो है ना। अभी मेरी बात सुन। अभी एक कंट्री में सिर्फ तू है ना, कंपटीशन कितना तेरे वही कंटेंट क्रिएटर लिमिट के। जी जी। तो एक तरफ है पूरी दुनिया के कंटेंट क्रिएटर, अच्छे से अच्छा प्लेयर तेरा कॉम्पिटिटर होगा। जी जी बिल्कुल। तो फिर वो चीज बहुत मायने रखती है। हम्म। ना क्या बढ़िया लगता कर है दी। ओजी आगे बढ़ पाएगी? लाइनेस जी ने तो भाई बढ़िया उन्होंने जीता ही, आईपीजी ने भी बढ़िया खेल दी है। आईसी बहुत जबरदस्त खेल दी है। फलक मुंडा पीपीजी बहुत वाले भी जबरदस्त खेल बहुत दिया। अच्छा। हैशटैग वन नहीं पीजी, वही हैशटैग वन थे इस वक्त। वाह, ओजी यार स्टैक 10 पे। जबरदस्त। ओजी हैशटैग 10 पे, आईसी हैशटैग 2 पे। दो चिकन और एक चिकन, बाकी ने क्या नहीं चिकन कटे थे। जैन ने कटे एक चिकन। अल्फा गेमिंग, अल्फा गेमिंग से इनर सर्कल। देखो इनर आज सर्कल दोनों। ये इधर दुबई दुबई से इसको स्पॉन्सर मिला ना, अपने पाकिस्तान से इसको नहीं मिला था, तभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया, इनर सर्कल्स रख दिया। हाँ, ते ओ क्या नाम, ये टीम तो तो मैंने बड़ी आपको बताया जबरदस्त था खेल रही सर पाकिस्तान कबूल। में, हाँ खेलने वाले बड़े अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, पर हाँ। सपोर्ट करने वाले नहीं। हम्म, अब इंडिया में ना देखो, भले खेलने वाले अच्छे भी हैं या नहीं भी है ना, तो फिर भी इंडिया के लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार अगला बढ़े आगे। ओके। सही है। बात ये पाक- है। पाकिस्तान में ये चीज की तो कमी है। तो इस वजह से इनको, आप सर्च करो हम्म, ना, आपको पता चल जाएगा, इनको स्पॉन्सर मिला ही नहीं था, उधर से मिला है इनको, दुबई से। हम्म, हम्म। गाइस चाय पियो। देख रहे इंडियन टीम ने भी ते वेलकम। ओ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਪੀਐਮਆਈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ, जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। मैच में लगा स्टार्ट ही होना, मैच स्टार्ट टीम ऑल्टर ईगो आरएस बेशक आउट इन दी ओपन है, लेकिन वो जो एक रिज का हाई ग्राउंड फैक्टर है वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। यूटिलिटी देखिए ठीक
ठीक उसी जगह के ऊपर फेंका गया था जल्दी जहां पर थोड़ी देर पहले हमें रोजमैरी दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिलहाल के लिए गड्डी देके रोजमैरी वहां से खेड़ाई फॉल बैक करेंगे, बच जाएंगे। टीम आइको एक्स ओरांगुटान उनकी साइड से स्पॉट हाँ आउट यार कर दिया देख गया फाल्कन्स के रीडॉग्स को। तो ये एक इजी अभी भाई एलिमिनेशन पॉइंट हो सकता है, लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली जी आइको एक्स ओरांगुटान उनको क्या रिस्ट्रिक्टेड कितने ने किया गड्डी की जा रहा खेड़ाई है दी। बैकयार्ड्स पर रहती टीमों की तरफ से। हाँ देखा फाल्कन्स के प्लेयर की साइड से हम्म, आएगा यूटिलिटी जैसे ग्रेनेड नीचे डाला लगे थे जाता है, ओरांगुटान्स की साइड से भी हम्म, नॉकआउट नहीं निकल आ पाएगा, लेकिन ट्रिक लो देखो ना एचपी ट्रिक जरूर किया जाता है ओरांगुटान्स की नेट साइड जा पर कर खिलाड़ी को। वहीं हो पर गया अल्फा ये गेमिंग एक अपना पोजीशन रीसेट करते दिखाई देंगे। यूटिलिटी शानदार रीडॉक्स की साइड से एकेओपी का एलिमिनेशन पॉइंट एक के बैकयार्ड्स पर ओपी नो रहते भी मैच अल्फा करा गेमिंग जैन उठाकर चले जाएंगे। एंड टीम जेनजी जीरो दूर दराज से एलिमिनेशन स्कोप्स ढूंढ रहे एलिमिनेट हैं। एंड पक लीजिए बहन जो ओरांगुटान्स इस मैच से बाहर कर दी जाती है। पोजीशन अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्कॉर्ड इसको लिंक डिफेंड नहीं कर पाते हैं। डिस्कॉर्ड लिंक फाल्कन्स अपने प्लेयर को बचा पाएगी, डिस्कॉर्ड लिंक हालांकि दे देख ब्रदर कर ऐसे उसमें ही को लग रहा है कि है हुन यार फाल्कन्स स्टैंड एलिमिनेट करना होंगे पड़ा पहले, ना कि ओरांगुटान्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस फाइट को अगर उस वहां पे तरह से पबजी खुल जाए ना संभाल नहीं पाती है। बल्ली बैन अल्फा हो की जाए साहब ना तरफ से भी हाँ कुछ हाँ ना तो कुछ आए हैं थर्ड पार्टी की सूरत में। आने वाले सालों ओरांगुटान्स में के ना ये प्लेयर के बड़ा लिए अच्छा मिशन खेलेंगे बाइस इंडिया टीम। बनते हैं। लेकिन खैर अभी फिलहाल के लिए अल्टर ईगो आरएस हम्म, जो कि वन ऑफ द अभी तक डोमिनेटर्स मैच आप है कह अभी सकते हैं तक चांस रहेंगे है इस ग्रुप एक अच्छा स्टेजेस में। जीतने का लॉक ऐसा ही रहा है, कम 28 पॉइंट्स बैक अभी के लिए हैं, चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट हैं। अभी फिलहाल के लिए जो एक क्लोज रेंज पबजी फाइट नहीं नहीं खुल बल्कि सकती है उनकी उधर अब जीएस के कभी अतराफ भी। दिखाई दे रही थी, वहां से क्यों फॉल बैक कर लिया जाता है। लेकिन अल्टर ईगो आरएस रास्ता वो रास्ता नहीं खुल पहले के सकती। क्लस्टर के अंदर फंस चुके हैं। एतराफ में टीम रिजेक्ट है, और भी एक दो नाम हमें उनके आसपास ही रोटेट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और टीम रिजेक्ट फॉर नाउ अपना जो पहला एलिमिनेशन है उसके लिए इंतज़ार कर भी रहे हैं, क्योंकि सो फार इस मैच का जो वो मोमेंटम है वो और जिस उसका तरीके से कारण जिस की तरह से भाई दे रही है। लेकिन टीम 9Z एक और एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हुए एंड दिस टाइम डायरेक्ट एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। सो ये जानना है कि क्या वो टीम ही एलिमिनेट की जा चुकी है। प्लेयर नॉकआउट जिनको कंफर्म किया गया, लेकिन आईसी के आईक्यू वो नॉकआउट हमें करते हुए दिखाई देंगे। कंफर्मेशन भी दी गई और ये रहेगी काफी आईडी अच्छा टीम रिक्वेस्ट जीएस पे जो है कि बिल्कुल सामने ही मौजूद है टीम इनर सर्कल्स के। सो इनर सर्कल्स अपना दूसरा एलिमिनेशन आई बिलीव इस मैच का टीम ने निकाल रखा है। टीम एपीजी जो कि उनसे 10 पॉइंट्स की दूरी पर है, ऊपर है, वो भी इस मैच में मौजूद रहेंगे। सभी के प्लेयर्स अभी के लिए आपको प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। मेजॉरिटी टीम्स के पास है, चारों के चारों प्लेयर्स रहेंगे। लेकिन टीम लूप्स ये कहाँ पर जा रहे हैं? टीम लूप्स के बिल्कुल सामने उनके बिल्कुल बाएं जानिब जो है वो टीम एई मौजूद थी, तो उससे थोड़ा सा आगे टीम जेन जी थी, उससे थोड़ा आगे टीम गॉड के प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन तब भी ये टीम बच जाती है, फाइट ये नहीं लेंगे और नहीं रुकते। लेकिन खैर राटो बॉय जहां पर अब आप जा रहे हैं, आई थिंक यहाँ से आपको नहीं जाने दिया जाएगा, बिकॉज इस एरिया में आप एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर मर्जी नहीं पूछी जाती, यहाँ पे अपना जो हुक्म है वो दे दिया जाता है। टीम अल्फा गेमिंग वो उतारते हैं राटो बॉय को, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया। दूसरे पेयर वो भी उतरेंगे, लेकिन कोई चांस नो नहीं टू और फिनिश रिवर्स पासानी उनको भी इस मैच से बाहर करेंगे एक एक अरे करके। नो टीम फिनिश दे लूप्स दें। जो कि लूप में चल रही अल्फा थी, बिल्कुल एक एक गेमिंग करके प्लेयर्स ने फ्यूजी रोटेशन करके भी दिखाई। तेल लेकिन स्कोडा जब फाइट वो चार एंटर हो स्कोडा जाते फाइट हैं लैंदी है अल्फा सर गेमिंग के पास, इट वाज अल्फा 15 गेमिंग टीमां च ऑब्वियसली 4 सिर्फ जिन्होंने इत्थे ही है उनके खिलाफ एलिमिनेशंस फिर कंफर्म किए और करते कराते अभी सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस करने वाली ये टीम है इस मैच में। यहाँ 4 देखो एलिमिनेशंस पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? हमजा को 3 बोलो से नो का 4 बोल के स्क्वाड्स हैं। 3 को आया 3 को आया ओए जी हाँ, और यहाँ पर असल फाइट्स तो त्याम्बा की चल रही हैं। ऑल्टर ईगो आरएस को अरे बार बार मुझे कहीं ना कहीं से लड़कों ने उन्होंने उठाया ही स्लैमिंग नहीं। दिया है, और नीचे लेकिन नो ऑल्टर ईगो आरएस उनके खिलाड़ी अब आखिरी बच हमसे चुके इतना हैं। दे ना 4 कवर देख एलिमिनेशन ला अगले पॉइंट्स ने की आके रोड ठाल पर है, लिया अपना लेकिन बंदा सामने से जेनजी आ चुकी है। काट आके एंड रश करके जेनजी बहन थोड़ी देर से पहले भी ये फाइट चल रही थी, काटे लेकिन अब करके उससे है भी ना आखिर बोर्ड आगे बहन से बढ़ाने की सामने कोशिश मरवा में देंगे मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जाएंगे। लेकिन ऑल्टर ईगो आरएस आखिरी नहीं करीब नहीं इस मैच से नहीं यार बाहर चैन कर दिए क्विक जाएंगे। त्याम्बा और करने मिल मिला करके एलिमिनेशन करते जेनजी सारे ये सारे के सारे भले हम चैन एलिमिनेशंस की को स्कोर कॉम्पिटिटिव होती प्लेयर मैनेज नहीं है, करते पर हैं। 3 ये एलिमिनेशन है पॉइंट्स कि तक मैं ये टीम बच आकर जा चुकी सपोर्ट है। दे लेकिन देते जेनजी हैं। वर्सेस त्याम्बा अब आपको चलता दिखाई देगा। आरसी के पर ये प्लेयर उसने कहीं टिकट दूर से ऐड नहीं, कर रखे ऊपर ना के कि भाई करीब से ही वो नॉकआउट दर्ज करते हैं त्याम्बा के किसी का खिलाड़ियों पर, और फिर से वही लूट खिचड़ी यहाँ पर ड्रॉप बचती आ आपको गया दिखाई ड्रॉप देगी, जहां टूटा पर गया 3 टीमें एक दूसरे से लड़ाई लड़ेंगी। लेकिन सर्कल इन कॉम्पाउंड्स को अबैंडन कर कर मजीद आगे जा चुका है, और जेनजी को बहुत फायदा ओहो पहुंचेगा इस चीज का। जब भी यहाँ से फाइट खत्म होगी, चाहे त्याम्बा बचकर निकल जाए या आरसी यहाँ से बचकर चली जाए, लेकिन जाकर उनको फाइट लेना पड़ेगी जेनजी से, और जेनजी इसी लम्हे का तो इंतजार कर रही है नो कि 2 को से 3 फिनिश फ्री के एलिमिनेशन पॉइंट्स वो उठा पाए। लेकिन त्याम्बा गिरने का गेट्स एलिमिनेट कितनी एलिमिनेटेड। आरसी 4 सर एलिमिनेशन पॉइंट्स इस ज्यादा मैच से देखिए कंफर्म चाइनीज किए कोटा जाते है हैं। कोरियन आरसी कोरियन वहीं ने पर सारे सही वो गेम टाइम प्ले पर आ गया, जबरदस्त बनाए मौके पर चौका लगाया गया, उनकी हैं साइड से 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स है ना उठाए गए।
एक ही खिलाड़ी की तरफ से टीम त्याम्बा ये पर, तो है। लेकिन आरसी अब आगे बढ़ना है उनको सर्कल में। जेनजी के अतराफ एक नॉकआउट दिया गया है, शायद पीछे रहते गोट के वर्निक ने ये नॉकआउट रजिस्टर किया है, बट लेट्स सी विद दैट। लेकिन आरसी बिल्कुल सही रोटेशन करते दिखाई दे रहे हैं, दूर होकर के उन्होंने रोटेट किया और बिल्कुल बैकयार्ड से एंट्री हासिल करेंगे अब बिल्कुल जेनजी के खिलाड़ियों के। लेकिन वहीं पर वुल्व्स और टीम डी प्लस किया आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फावियान को नॉकआउट किया गया है टीम डीके के अतराफ। जी हाँ, एंड फिलहाल रोटेशंस है वो हो रही है अभी भी। हमें रिजेक्ट, आई थिंक पहले जब हमने देखा था तब भी ये टीम कुछ जो है वो रोटेशंस के लिए तैयारी कर रही थी। अभी दोबारा इनकी तरफ हम आते हैं तब भी आपको रोटेशंस है वो टीम रिजेक्ट करते हुए दिखाई देगी। सो इस मैच का जो सफ़र है वो थोड़ा कठिन रहा है आई थिंक टीम रिजेक्ट का। लेकिन दो प्लेयर्स हैं सारा जो कि बिगड़े सर्कल के अंदर आ चुके हैं। फिर आप रेजी को देख सकते हैं जो कि सर्कल के बिल्कुल एज पर मौजूद है। उनकी बैक साइड पर टीम वुल्व्स है, सामने की तरफ ऑलरेडी नेड सारा को टीम अल्फा गेमिंग का सामना करना है। सो बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन टीम रिजेक्ट कोशिश करते हुए कि नेड्स को डॉज किया जाए। पहला नेड डॉज भी कर दिया प्लेयर ने, लेकिन दूसरा नेड जाएगा और इससे डैमेज आपको जो है वो डील होता हुआ दिखाई दे जाता है। सो टीम अल्फा गेमिंग हाइट एडवांटेज, थ्रोएबल्स मौजूद हैं, एक एक करके उनको इस्तेमाल नहीं किया नहीं जा रहा है। लेकिन साढ़े सारा 10 इसी मारी था उम्मीद नेड पर, इसी सारी उम्मीद पर लग कि गया, इनके ऊपर तीर जो ने तो नेड है वो चुका ना दे जाए, है। इनको नेड ना कनेक्ट वो कर भी पाए। सेम लेकिन चीज डी प्लस जो है वही है। वर्सेस टीम जेनजी, और जेनजी जिनके पास फिलहाल 3 खिलाड़ी लो वे मौजूद हैं। देखते हैं कि क्या टीम लिख डी के प्लस लग क्या गया। को टेक ओवर कर पाएंगे, क्योंकि जेन के दामी वो गिराए जा चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी को वो साथ ही मौजूद रहेंगे जिनके ऊपर शॉटगन आई थिंक चलाई जाती है। नोलबू विद दैट शॉटगन नॉकआउट निकालेंगे, जन लेकिन बेटे बैक को साइड पर नो मौजूद किधर चिप्स वर्सेस क्विक, ये भी एक फाइट अभी होना बाकी है। लेकिन ओसाल वर्सेस जल्दी नो। शेल्डन, ये राइट साइड पर है जो कि यहाँ पे शायद फैसला करने वाले ओके इस फाइट पूरी का। की पूरी टीम मुकाबले खा की गई। ला एक भाई, थर्ड पार्टी का रिकॉर्ड ला मुंह भाई से गिराया नागरा। यहाँ पे आ मौजूद है। नागरा दोबारा निकले से भाई। वो भी टीम फाल्कन्स जिन्होंने थर्ड पार्टी की, और इससे पहले जो एक और सीरियसली ही सर्कल का मैच हमने देखा है कितनी दूर उसी हो को गया, याद ताज़ा स्वाद लग करते गया हैं। सारी उसके बाद फाइट फिर दा। इट वाज टीम ओजी जिन्होंने थर्ड पार्टी करके टीम को एलिमिनेट किया था। इस मौके पर टीम फाल्कन जो है वो थर्ड पार्टी करती है और टीम डी प्लस किया को उसको आखिरी भद्दो एलिमिनेशन में दे कंफर्म रहा करने नहीं दिया जाता। कि किम्परा नगरा। जी हाँ बिल्कुल, एंड डी प्लस किया ना भाई अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल के कार ले ले लिए सरवाइव तो कर रहे थे, लेकिन चल यार अब कार शायद ना ले कर ले पाएंगे क्योंकि फाल्कन्स के रीडॉक्स आगे बढ़कर चोट। चिप्स का एलिमिनेशन पॉइंट उठा लिया है उन्होंने। नोलबू आखिरी प्लेयर रहेंगे, एंड डी प्लस किया अनफॉर्चुनेटली उसी तरह से स्ट्रगल कर रही है जिस तरह से पिछले स्टेज में अल्फा गेमिंग स्ट्रगल कर रही थी। नथिंग एब्सोल्युटली एट ऑल इज वर्किंग फॉर देम। जो मर्जी कोशिश कर लें सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने की, एलिमिनेशन पॉइंट्स निकल नहीं रहे हैं, लेकिन जिगल अच्छा था, बच फिनिश। जाएंगे थोड़ी देर के लिए नोलबू। फाल्कन्स के प्लेयर एडी का जोर लगाया नहीं उन्होंने नहीं कि नहीं जैसे तैसे बच कर गया कर वो बच आखिरी गया। बुलेट भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन बच जाते हैं। नोलबू दरख्त के कवर में आएंगे एंड हीलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर टीम इनर सर्कल और 9ZG दोनों ही एग्रेसिव नाम आपस में देख लड़ाई करते जोन से दिखाई दे रहे हैं। टी2 कोर की चेक कर साइड से हम देख। अब जाकर के नॉकआउट किया चेक जाता कर है जोन से 9ZG एंट्री। की तरफ, एंड ये क्लोज रेंज फाइट शुरू हो चुकी है। टीम इनर सर्कल की साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी तो सर्वाइव कर ही रहे हैं, बल्कि एक प्लेयर नॉकड आउट है। एक प्लेयर का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म नहीं किया गया अभी फिलहाल के लिए, इनफैक्ट कर दिया जा चुका है। इनर सर्कल की साइड के ऊपर तीनों के तीनों खिलाड़ी हैं। अब जाकर दूसरा नॉकआउट दिया फिनिश जाता है कोटा आईक्यू की साइड पर। 4 अनफॉर्चुनेटली मोलोटॉफ की जद में आ जाएंगे, लुपसी एलिमिनेशन पॉइंट अपना देना पड़ जाएगा। लग गया। लेकिन आईसी 9ZG फलक उनकी आईसी साइड पर फलक नो भी आखिरी फिनिश प्लेयर पा रह गए। चुके हैं। लूप्स के प्लेयर आते हैं कहीं और से और फलक का भी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर कर चले जाएंगे। दो टीमों के सोलोज मिल मिला करके टीम इनर सर्कल को इस मैच से बाहर करने पर मजबूर करते हैं। 9x एलिमिनेशन जी। पॉइंट्स में देखना चाहूंगा कितने आखिरकार उठाकर लेकर गई है टीम आईसी इस मैच से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर लूप्स के प्लेयर आपको जाते दिखाई दे रहे हैं, एंड लूप्स के प्लेयर ज्यादातर की साइड देखो से ना अच्छा खेला तो गया। 3 सोलो ओके लो। फोकस एलिमिनेशन ऐसी ही पॉइंट्स उन्होंने टीम को दिया कंट्रीब्यूट जा रहा किए है। हैं। टीम आईसी क्या उतना बुरा भी नहीं खेला उन्होंने, हाँ प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिले, ज्यादा फोकस लेकिन ना 5 ऐसी टीम एलिमिनेशन को दिया पॉइंट्स जा इस रहा है। मैच से जरूर निकाल कर लेकर गए हैं। आईसी फोकस टीम मतलब इंटरनेशनल। हो रहा है अल्फा ना कि गेमिंग द मोस्ट आईसी टीम। कंसिस्टेंट टीम एट लीस्ट फॉर दिस डे। हाँ ये फलक वाले चौथा मैच है हाँ और ये चौथी दफा जिसमें होगा फलक को कि जला दिया अल्फा जा रहा है। गेमिंग शायद इस मैच का चिकन डिनर के करीब चली जाएगी। हर एक पिछले मैच के अंदर टीम अल्फा नहीं गेमिंग ने लड़का बहुत बहुत अच्छा गेम शिकार प्ले कर करने रहा की है। दिखाई है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम अल्फा गेमिंग चारों के काफी चारों अच्छे प्लेयर्स गेम हैं। मारे हैं सर्कल उसने। भी बहुत वुल्फ मेहरबान है टीम अल्फा वुल्फ गेमिंग के के खिलाड़ियों नेट पर, हो और रहा है भाई ये देख रहा। ग्रेनेड देखिए दो कहां नेट से है कोई निकला था ये एलिमिनेशन नहीं और मिल रहा है कहां पर जरा। आकर क्लिक किया है बच गया। वुल्फ्स के डॉरिन को। जी हाँ, नेट और नेट दी कुछ और स्प्रे टीम है सो थ्रोएबल्स आई बहुत थिंक उनको भी एक्यूरेट जल्दी एक्सपेक्ट है। करना है हमें। एंड टीम वुल्स जिनके 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, डोरिन को जल्द से जल्द अपने आप को हील अप करना पड़ेगा बिकॉज इट्स टाइम फॉर द
डिसाइसिव फाइट्स, और जिस तरह से हमारा स्टेज 6 आ चुका है, हमें अब डेड सर्कल्स हैं, डेड यहाँ पर जो डेडली जो फाइट्स हैं वो भी यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए दिखाई देने वाली है। सो यकीनी तौर पर एक एक एचपी आपकी टीम जो ओजी नंबर तो काउंट टीम करने वाली है। आईसी लेकिन सो फार दोनों दो ही टीमें इनफैक्ट जो कि हमें बहुत अच्छे आगे सर्वाइव करते हुए दिखाई दी हैं। टीम जीएस है जिनके 2 प्लेयर्स दोनों ही मैच को में भी दी सर्वाइव करेंगे, अपॉर्चुनिटी टीम दो टीएस उनके चारों के चारों प्लेयर्स तो मौजूद हैं, और वाई टीम इनफैक्ट उधर इस मैच में जिनके जीएस सारे के सारे प्लेयर्स भी हमने सर्वाइव करवा के भी रखे हैं। लेकिन जीएस के खिलाड़ी गाड़ी से एलिमिनेट हमें करते हुए दिखाई देंगे, और टीम लूप्स इस मैच से बाहर हो जाती है। लूप्स का सिर्फ एक ही खिलाड़ी था, उम्मीद पर थे कि शायद उनको नहीं देखा जाएगा, कुछ वक्त हमने पहले भी उनको देखा था, लेकिन शायद इस दफा मौका नहीं मिलता, और बिल आखिर नंबर 8 पर ही उनको यहाँ पर इत्तेफाक करना पड़ेगा, एक पॉइंट प्लेसमेंट का जो कि मिल जाता है टीम लूप्स को। नंबर 9 पर ही सफर तमाम ओवरऑल रैंकिंग्स में, लेकिन टीम एसयूपी जो कि उनसे ऊपर मौजूद है, उनके भी खिलाड़ी के एचपी में कम होते हुए दिखाई देते हैं। पता लेकिन लग डीजी रहा गंभीर है। को अपने लिए यहाँ पर बनाते हुए स्मोक का एक पाथ, आ और रही है आहिस्ता मेरी। आहिस्ता हाँ सर्कल के हाँ आ अंदर रही भी एक आ रही खिलाड़ी में जाता हुआ दिखाई देगा फॉर श्योर। लूप लेकिन तो फटा नोलबुक, लगने वाला हूँ यू हैव टू बी केयरफुल। टीम फाल्कन जाहिर है रैंडम फायर्स स्मोक अगर चेक करते कर हैं, रहा और हूँ रैंडम फायर में से कुछ भी बुलेट्स अगर आपको कनेक्ट कर गई, 2 प्लेयर्स अगर मिलकर फायर किया तो यकीनन खिलाड़ी मैच से एलिमिनेट हो सकता है। नोलपुर के शॉट्स हिट भी करते हैं, कोवा वंस अगेन शॉट्स फायर करना भी इसमें इनको भी बाकी है, लेकिन एपीजी अभी वो शायद नहीं मुझे करेंगे, लग रहा रुक है जाते हैं, चिकन शायद करे। अपने बुलेट्स को जाया नहीं करना चाह रहे, और थोड़ा वक्त भी देंगे नोलबुक को। लेकिन वो वंस देखो ना अगेन स्मोक बुलेट्स करके फायर हो मतलब रही उसके हैं टीम साथ साथ बीजे भी के। चल रहे हैं नोलबुक वैसे। जिस तरह से लास्ट मैच उन्होंने चिप्स को देखा था, उन्होंने सर्वाइव किया, दिस टाइम इट वाज विद जैसे वन। जैसे एक एक आई स्मोक बिलीव कर जो रहा है कि ना उसके शायद साथ साथ एक चल रहा और है। पेड़ को लेके जाने वाले, एक और को लेके जा सकते हैं। कामिकाजे वो सामने ही मौजूद है, पत्थर के पीछे वो प्रोन अपने आप को कवर दिलवाया जा रहा है उस पे की तरफ से, उन्हें लेकिन पता है नोलबुक जमुन करना सक्सेसफुली मैं पकड़े जाएंगे, और टीम एलिमिनेट करने में टीएस जो भी हो इस मैच सके में नंबर 7 पर बिल एक आखिर दो निकल एलिमिनेट हो सकता है जाती जरा है 3 एलिमिनेशंस के साथ। 6 टीम रह गया 18 बंदे रह गए हैं एक पीजे नहीं लगना है एलिमिनेशन जी पार्टी हाँ फिर कर बिल्कुल, दिया एंड वहीं पर मैंने तो नहीं आखिरी लगता 6 टीमें बाकी रह चुकी हैं। अल्फा गेमिंग 53 पत्ते पॉइंट चढ़ ऑलरेडी होंगे जाएंगे हो टीम चुके हैं जीएस के खिलाड़ी उनके, और अल्फा गेमिंग 6 में बासानी अभी एलिमिनेशन अपना भी 6ठा एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे। एंड अल्फा गेमिंग की ये खासियत है, जब भी परफॉर्म करना शुरू होते हैं तो फिर उनकी गाड़ी रुकती नहीं है, लेकिन गाड़ी अब रोकने की कोशिश शानदार तरीके से की गई। एक प्लेयर को गिराया गया, लेकिन टीम बात की जाए सुपर मैसिव की, वो बैक से रहते सुपर बैक स्टैब मैसिव करेंगे टीम वुल्व्स ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को, उनको बैक स्टैब कर दिया जाएगा बैक यार्ड्स पर रहते अल्फा गेमिंग के प्लेयर की साइड से। एंड अल्फा अल्फा गेमिंग के इतने ज़्यूल डाउन में मजीद अपना 7वां एलिमिनेशन पॉइंट पपारा सुपर मैसिव के ऊपर कंफर्म करेंगे। आखिरी प्लेयर का एलिमिनेशन पॉइंट सुपर मैसिव का टीम फाल्कन्स के खाते में दर्ज हो जाएगा। लेकिन आखिरी कुछ घड़ियां चल रही हैं इस मैच की खवातीन हौजा, जहां पर अगर अल्फा गेमिंग चिकन डिनर कर लेकर चली गई तो पहले पायदान का लीड कहां से कहां पर वो लेकर चले जाएंगे। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑलरेडी ये मंगोलियन डोमिनेटर्स अपने लिए कंफर्म कर लेकर जा चुके हैं। लेकिन टीम सीक्रेट उनके प्लेयर अगर सर्कल के अंदर अपनी जगह बना ले, लेकिन मसला ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है मैच कि स्टार्ट जहां हो से गया वो भाई सर्कल के अंदर आएंगे वहां देखिए से वो फिर मैच सैंडविच। चलो भाई पहला मैच स्टार्ट करिए मैच doesn't start yet la 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 पहला मैच तो स्टार्ट हो चुका है ਅਸੀਂ इधर वेट ही करी ने हमजा स्क्रीन शो हो रही ਤੁਹਾਨੂੰ एडवांस करेंगे 720 नहीं नहीं फिर तो नहीं है। एक जगह रुकी हुई अब देख नहीं एक जगह रुकी हुई रोंडो जोन 9xg कोट इचे रोंडो च रिकॉल भी ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਇचे रिकॉल भी ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ हाँ इसमें रिकॉल भी दी है ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ 9xg ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਲੈ ਗਿਆ ਨੋਕ फिनिश टीम आईसी पूरी एलिमिनेट करती है उन्होंने टीम आईसी पूरी की पूरी एलिमिनेट करती है उन्होंने
शिट यार ਵੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਲ ਕੁੱਲ ਕੱਢਣ शिट मैन ये तो पूरी पूरी टीम है जीरो एलिमिनेशन थे OG ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿੱਲ ओहो 1v2 जाके करूंगा ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਚਿਪਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ नहीं था जीएस आइकन ਉਹ ਹਾਂ आइकन जीएस आइकन ट्रिपल डबल डबल ਹਾਂ recording ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ ਨਾਈਸ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬਈ OG ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰ 7-8-10 ਕਿਲ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਐਟਲੀਸਟ 1-2 ਚਿਕਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਟੌਪ 5 ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ 1-2 ਚਿਕਨ ਚਾਹੀਦਾ XG नेड जाऊगा कि नहीं वो बच गया बच गया बच गया ले गया फिनिश ये था नहीं यार जो गन चेंज करके मार गया RC और भी दागा टाइटन ने भी एचिंग एदी गल करदे भाजी नहीं ये नहीं यार वो CHPS ਜਿਹਨੇ ਨਾ ले ਰੱਖਿਆ RC डिवाइन रीकॉल दे रीकॉल वाले ਵਧੀਆ खेला है यार 92 पॉइंट वो देखा अल्फा गेमिंग ਦੇ 92 पॉइंट कर भी चुकी है वो दूजे वाले ਨਾਲ 30 पॉइंट ਦੀ लीड ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਦੀ ਆ 30 ਪॉइंट ਦੀ 3 ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ OG ਆ OG 27 पॉइंट है ਤੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ ਦੌੜ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੱਕ ਆਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖ 2 ਤੇ 3 ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ OG ਵਾਲੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਚਿਕਨ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੈਂਕ ਅਪ ਜਾਣਾ ਆ लूप्स भी गया ये रह गया सफियाना ओजी टीम होते अपनी ओजी टीम वेरे तो ओजी टीम मुझे जोन होल्ड कर दी ओजी की फाइट हो गई क्लोज इन होया दोनों दे क्लोज इन हो रहे ना दोनों दे 1v3 सामने की रहता हमसे 1v3 होगा कि नहीं होगा 1v3 करूंगा कि नहीं करूंगा इधर तो इंजन होना है जरा लूट करना बैठा ना ये बैठा चल रही है प्रॉपर ओए देख चेक कर
चेक करो लै गया दोनों जोन चो आ गए फिनिश कर गए तो वो मोबिल लूसी पूरी 33 पॉइंट आ रहे वो जे लगा 27 पॉइंट है उन पूरी टीम अजे खड़ी है ज्यादातर टीमां दे 1-2 नो फिनिश है टोटल गिनती है 7-8 8 टीमां दे बंदे के आए पर गए ये कोटी टीएस भी गए 15 पॉइंट आ गए जी वाले भी गया था सेंटर से करे पे नेड आना मुंह से दे नेड कई पूरी टीम हो चुकी शेट है जो 27 पॉइंट थे एक एलिमिनेशन और साना जबरदस्त ने अल्फा गेमिंग की साना जबरदस्त खेल दी हमसे 93 पॉइंट हो गया नॉक फिनिश एक को अल्फा गेमिंग का नॉक फिनिश एक को नॉक five eliminations that's the difficulty, right? Is that as much effort you put in, you're always going to be fighting even towards those later zones. This is why having compounds, having strong positional lamp is so important, because it's less about, you know, playing or position. It's more about getting a breather in these games, you know, taking a moment to be like, right, we don't want to fight for 5 minutes, so let's conserve ammo, conserve utility, conserve players. The game now with no recalls left available. Krypton for Alter Ego. They're playing as 3. Peppered. Genji hoping that the circle goes to the middle. Alter Ego have to back it off. Krypton stayed a little bit, well, actually probably moved just about in time. A hard south shift gives Reject maybe an outside chance here, but you imagine the Wolves are going to be pushing across. You think the teams on the east side, maybe GS, transition down to crash onto this area and see what they can find. These buildings, pretty hot real estate right now. Apollo finding Xeris. It's taking them down. Reject now with 2 points on the game. Not amazing. They're getting something done here. For Gen G, if they win this game, it will be the back-to-back, the technical back-to-back from yesterday, finishing out last. Team Alpha के दो ही रहती है. Starting today on Rondo over win would be fantastic for their point scoring. Alpha Gaming top the Alpha Gaming top. Yesterday. No. Big Elan Games talk. बहुत जबरदस्त नेट दिख रहा है. Back tire and up to the side window there. Blasting through with a shrapnel. And there's the flush coming through as well. Go on Flash one भी DS now looking to move to the last player. Falcons, Koa can't stand up to it. Themselves as 4 and not in this zone, and they get lined up. या ज़्यादा फाइट से देखने का स्वाद आना ही आई सी. Just as well for APG. He's just in this net, sir. वो जी दोनों हैं आपकी करते कितना मैच. I think that they threw themselves in the deep end a little bit yesterday. Just started taking fights. I know some of those fights honestly weren't going very well, but I'm glad they were just like, we sort of need to get into the mentality that we're big dogs, all right? Because at the moment they were playing so weak, they were playing so scared, and now they're just rapping a lot. And yes, some of these fights are messy, but there's definitely more confidence here when it comes to taking those engagements. And I think that whatever has happened behind the scenes there, whether that's a call made by a coach or a call made by one of the players in the team, is we just taking fights. It's been the right call, because I think all those players are really good in the role. We've seen them play at high levels in the past when it comes to fragging power. I think it's a case of Iraqi squad, Iraqi.
big international. हाँ शायद Absolutely necessary for हाँ defending इराक champion के team at least. D plus to put the best foot forwards. Hopefully try and change that around. Teams are starting now to move in towards those buildings. You can see वॉल वॉल Japanese को ही still चलना holding on to सही जा रही है this side of the बैकग्राउंड से क्या आवाज किया नहीं आ रही? It's the team that's looking to आ try and रही reach थोड़ी towards it. They're not having the best of time though. D plus with Alter Ego at the back. Hosel has a nade bobbling down एक और towards नेड him, but he doesn't quite spot it. के यार Another nade over the top finds Snape, and there is a little bit of an answer. The cover flare एक nearly ही था lands on Alva's head, so he does need to be careful not to tumble ओह इसको down. नेट देखा आपने? Oh, but the परफेक्ट गया उसका। D4 is playing नेड ये well. देखो देखो नेट चेक कैसे दिखा Maybe था जा रहे हैं। more than one as they just पूरा nearly ऊपर मार take रहे out हैं that win. नेड But goodness me. अल्लाह सारी सारी स्कोर ओह खाली नेड वाली खा गए हो I am बचा terrified. गया I लग think he करके खा was गया even फिर नेड considering holding the angle or not. He backed up, but he's वो नॉक हो गया, really चेक नॉक हो कर गया। Snape once again. Another one over the top there, getting very close to नेड scoring फिर points. I think they will just leave there. 4 वो players to बच go down there. फिर नेड Blue starts to वो push भैन चो in. कितना D बची plus ਜਾਂਦਾ यार up तेरा in it. They will have Alter Ego's number here. Wait for a big ਉਹਦੇ burst ਲਾਗੇ towards the ਇੰਨੇ ਨੇੜ back, and ਵਾਟੇ there ਭੈਨ it is, ਚੋ leaving now D plus with just the one player. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ It ਹੁੰਦੇ has ਆ to be efficient. It's all down to Nobu. Needs to get these reses. It's not going to be easy. There's off angles to deal with as well. PPG actually taking shots. कितने Tom's नेट going to have to लेकर घूम रहे keep हैं? busy. He's taken down the नहीं South नेड Koreans in गई the पूरी meantime. वो ये स्कोर परफेक्ट They are नेट है, ये looking परफेक्ट for नेट है। trade. Oh, पूरी that's परफेक्ट early. पा गया So much damage. I think हाँ दब जा गए गई गए दब गए जा गए गई गाड़ी से। vehicles यार going वो देख as नेड well as Krypton just keeps on layering down these nades. गड्डी Supermassive लेके आ not गया getting तेरे stuck into से Alter Ego just yet, but they'll crest the ridge line. They know it's just Nolbu left standing. They break one down low. He'll go for the challenge, force them up high. They're playing off each खत्म other. Costs गाड़ी खत्म फुट गई, गाड़ी फुट गई। there will be खत्म a शर्मा और यार आगे ਜਿਹਦਾ बढ़ो। डिस्कॉर्ड तो देखने वाचिंग ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ to ਹੈ get all of those नहीं elims है one लाइव tucked तो ना away. काउंट There's इतना कर going to be बची D तो plus down. 8 elims ई found. स्कोर ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ Heavy elim teams ਉਹ already ਗੱਲਬਾਤ out on ਕਰਨ this ਨੂੰ one blank. Maybe we'll ਜਿੰਦੇ see ਲਾਈਵ ਤੇ one ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਹੋ Toronto ਸਕਦੀ elim chicken dinners here. I'm not lying. The most dangerous thing there for D plus was not Alter Ego, ਪਰ ਇਹ but instead ਆਪਣੀਆਂ the ਦੋਨੀ vehicles ਟੀਮਾਂ around him. ਭਾਈਆਂ ਨੇ Showing no respect and just ਉਹ let ਹੀ explode ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ in their ਕਰਨਾ face. ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ In the meantime, though, ਇੰਜਨ it ਨਹੀਂ is Alter ਕਰਦੀਆਂ Ego ਰੀਜਨ ਵਾਲੇ trying to send away, but some great shots ओजी there टीम coming कहाँ through गई? for Gen G. वो So पहले ही Seven. एलिमिनेशन हो गई। back ਉਹ to दोनों ਓਜੀ ਟੀਮ to move ਪੋਪੀ into Reject's position off of the हाँ? distance there. Just in between, playing Biggie in the middle between Apollo क्या कह रहे as हो? well as ਉਹਦੀ Sarah. ਟੀਮ ਮਰ ਗਈ नारगी का तो और कदम वो भी आई थी What a fantastic moment from Divine earlier to get इसमें this वो one अभी into जिंदा the होगी finish एपीजी this वाले। वो भी एपीजी पीजी ਜਿਹੜੀ मार अल्फा गेमिंग भी खत्म है सारे सारे स्कोर फिनिश हो गया ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ एई ਲੱਗਿਆ जिंदा है। ਇਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੈਸਟ Very happy to be ਕੀਤਾ able to 7 flag ਕਿਲ this ਕਰ one out ਚੁੱਕੀ as ਹੈ long as they can. Sit in those buildings. They can ਟੌਪ 3 ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ Gen G, they're going to have to cross the road. Doran, keeping things going. Moment, I mean, Gen G, a big win for them here. Would speed them up probably towards the top 3 blank, which would be a real nice find for them. Starting on 40 points, getting a 20-point chicken dinner total. That's very, very doable, and they're the only full 14. I'm thinking that we might see Gen G up in that top 3 spot. We'll have to wait though. There's plenty of teams will try and extract a toll on them as they make their approach. They're flanking out wide. They've put that 2-2 out, but they're going to have to regroup it. Yeah, the only thing that concerned me yesterday from Gen G's win is like watching those final moments with the UMP shots. I felt like the score आ गए squads were 11 a बंदे little bit Hold concerning it, कल्ले in बंदे ने कितने terms कितने of capability versus some of the squads. So it's just that firepower that concerns me for Gen G. I will जेन say in पूरी terms of स्कोर 8 किल rotations, कर like चुके they've हैं पूरी की पूरी good स्कोर कर आप जेन टीम चिकन so far. कोऑर्डिनेशन टीम की कोऑर्डिनेशन देखो कि बैठी कैसे है। In this particular circle, though, I don't think there's really anyone else that challenges them out massively. चार के चार I do पूरे think यार that ने एक अपना if साइड से anything 8 goes किल right, कट गए it doesn't उन्होंने matter चिकन से जाना the gun skill at all. As long as they set up एक the साइड से angles, they बैठी है वो refrag one another. Should be इजी Gen के G. लास्ट में जाने हैं जोन दे बाहर Ooh, well, that shift though does make that a little bit harder. That Gen G win maybe a little bit further out. वो थोड़ा जा हार्ड होगा ना नहीं As you said, the numbers. I जोन mean, it's एंटर just करना such a big advantage to be playing with all of this leeway. Sara, though, it feels like he's got Claws on lockdown at this point. I think Claws knows about it.
Sarah's not taking the peek out this way, not just yet. Check That's a brilliant pickup for Claws. What a shot. Excellent reactions. check coming through karo from Gen G. bhai suno And he steps into the check garage, he's kari tucked away the vehicle. This should pretty much confirm it. gadiyan de kitna lag gaya andar jaake Right, yes. ye surprise hoga I'm okay to see it. I'm all okay with him proving wrong. Good to see the improvement there from Gen G. Apollo on his lonesome upstairs, and feels like divine sacrifice was all for naught. Apollo looking for the heal, and now up against 4 players. Like I said, the refrag is there. It's easy peasy. Reject goes down. easy peasy te karta na da bahut zabardast Should have peeked that. hanji hanji baba Peek that. Yeah, you It wait for really Gen G did to just move, leave right? Apollo, high and dry, and now Gen G has the high ground position in the center of the circle. So there's some, and I would say it's probably quite categorically bad maneuvers happening from Reject during this tournament. Yeah, well, I mean, there must be a reason they're in 15th place right now, right? It's not been a great run for them, which is a bit ये सारा थले disappointing. team है But someone's got to be 15th, दो someone's got to be RCTS 16th. Trombi खत्म है last और down, that was एलिमिनेशन massive. 11 किल They go कर चुके down हैं in 5th मैं जो place. टॉप 4 With च आ their गया elims, though, they'll make आ quite जैसी टीम a जैसी decent फोटो impact 4 on च आ this गई भाई game. कित्थों दी A किथे lot of teams have had in that 5 to 9 elim इस boundary, वक्त ज्यादातर which चांस is क्या है कि quite भाई ये interesting. It'll चारे be भी खेल लेना one of दे the होने more हैं चारा जो spread 3 out खेल लेना दे होने हैं performance earning systems that we've seen. I think since its release into the PUBG Mobile ecosystem. Yeah, it's been a really slow game. And I think चारा that's तीन mainly खेल लेना because दे there's होने हैं just so much fighting all around the map, which led to one team getting 5 or 6 points, then they would get taken out, and then another team would get ओए those 5 ओए or ओए 6 points, then they would get taken out. ये The meantime, हो though, गया it is Gen क्या G. बोलते Dammy finds Snape to start फिनिश things off, but it's Doran to find फिनिश Satan. Claws immediately goes for the smoke, but Doran will finish him off. So that's 12 elims फिर right ने now लगे for Gen G. The Wolves aren't giving up too easily. ये काम गलत हो गया थोड़ा सा मैं बहुत जबरदस्त खेल रही हूं बहुत जबरदस्त करती And G spot that cross, Claws with the nade, looking for Igor. Doran on the back. In the smokes here, nice little cover off. You can see that he's protecting against leaking. मैं बस नीड देखा Going a little bit further out. Dammy though has that वो high देखो ground वो plateau and may be ਉੱਥੇ able ही to बैठा है see सोलो something just about over the top. तुर्की GS with their तुर्की last को player as well, hiding in a corner. Very, तुर्की very कह रहा central. मैं He ईरान lost का out quite a while. Eagle with a nade. Actually जीएस able to find one of Gen G as Doran ਉਹਨੇ looks to अपना get नहीं across ਉਹ as well. थोड़ी ही लिया Reed is बिल्कुल there quick. फुटस्टेप He's तक not नहीं going to be able करने to get through. जे And वो the चिकन flush ला is गया there. ना So now a 2 versus 3 with D3S. आज तो ही नहीं है Outside भाई wild card. For Gen G, let's be quite honest here. A 3-man Okay. split at this point in the game is ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿਹਾ diabolically ਧੱਪਾ ਹੀ ਕਰਨਾ bad. ਦੇਖੀ I don't know why we're ਆ going ਦੇਖ with a ਚੈੱਕ 3-man ਕਰ split ਸਿਸਟਮ here. ਲਾਇਆ Yes, ਇਹਨੇ you want to cover all ਚੈੱਕ the ਕਰ buildings, ਇਧਰ but you're almost certain that this is just straggler teams. And already they showed ये us नागरा ये नागरा refrag position over towards चेक कर Apollo. इधर ये So सिस्टम नागरा they है just need to clear on this building. So this is just like, I'm not sure what the plan was, but it's opened things इनका up for ਮੈਨੂੰ Wolves. नहीं पता प्लान Both की those ये है eliminations, प्लान ਦਾ ਬਹੁਤ they खतरनाक don't है happen for Wolves 5 unless ਬੰਦੇ ਰਹਿ Gen ਗਏ G 3 opens ਟੀਮਾਂ the 2 door 2 for ਰਹਿ them. ਗਏ ਆ And Gen G left that thing completely unlocked ਜਾਂਜੀ and ਤੇ ajar. ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਟ ਲੈਣ ਦੇ So if ਮੂਡ ਜਾ Wolves are वो then to win this स्टेगार game, it's completely on Gen G. वोल्फी जार I think GS win this game. Just saying. Okay. I feel like these two teams are going to scrap it out. They're going to forget that there's another player. Or not forget, but be more preoccupied. And I think D3S has this. For no other reason than for the vibes. I think it's entirely unlikely, but I did like saying it. And the zone's closing. Fairly central. It's on top of Wolves. That gives them the advantage. Yeah, well, I mean, GS is just hiding out right now. He's camping. Yeah, I guess so. You could say that. I mean, GS is struggling Nice, a yeah. little bit, but you try and get some points where you can, don't you? Really. ਇਹ ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਟੂ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਾ But it's not going to get him top 3. It ain't going to get you top 3. It might not even keep you at top 5. ਟੌਪ 3 ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਮ ਟੌਪ 3 ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ See what he can go for. I don't think Quick is aware of the player on the ground ਤੇ floor. I mean, It is. he's playing on the ਟੌਪ 2 corner. ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Sorts of counters it, but D3S has not made a move in a long while.
The blue zone will force it as the flares start to drop thick and fast down the main road. That's going to make it a little bit more navigable in these close-range fights. These smokes are starting to dry out, but Quick has managed to get across here, Blank. The question is, how safe is it? They have regrouped fully on it. They've let D3S actually stay alive, alone in that corner. And these the fabled wolves walls coming through with the emergency cover. Wolves Doritos, Dora in the Dorito thrower. As it goes, attempts to go upwards. Nice damage there from Gen G on Dami, but he goes actually just gonna push it up. That's very aggressive. Oh, but he finds the first. No, sorry, I got a minute. We're on with Dami. Yeah, he's immediately lighting that up. D3S is chiming in though now. If he can find one of Gen G, it's a 1v1v1. Nade in hand, maybe closer to the middle. No, needs to step a little bit further forward. परफेक्ट Oh, you're evil. Can't peek out. उसके रूम में जाके गोली लगी और बम लगा ये तो उधर ही बैठा हुआ है टॉप 2 हो गया There's now with a chance for GS. Will he be able टॉप to 2 find कर it? गया चिकन जे कर गया ना Desperately wanted to close it down, but the healing needs to come through from Dami. He drops a molotov. Oh, that's a huge ले गया चिकन ले गई बैंड ने चो टॉप को बन चला गया टॉप 2 चला गया अपनी टीम को But Gen G get a big Gen chicken G. dinner. That will catapult them up the tables. They're looking for the top 3 on the end of that match, and the technical back-to-back is true. Again, slightly, there's some things about this team that are concerning for me, though. I think that is my main issue right now, is I have concerns. And again, I do like this team. I like what they're trying to achieve. I think for a team that feels more like an underdog right now, they're doing very, very well. But there are just so many moments where feels very wrong. And I think in a जो पहली छोड़ गया उन्होंने बढ़िया कनेक्ट हो एंडी ब्लॉक आंदा पहला the game ने सारा चिकना तो बोला नहीं must be very pleasing, and that buffer though might be enough if they can continue to improve their performance, get them into the top 3 and keep it up. Again, a few of these players have been around for a very, very long time. I think Dami, for him, this is a dream come true on the big stage. Absolutely, it's brilliant. बराबर में इसके ओजी वाले बैठे हैं इसके बराबर में ओजी वाले बैठे हैं जेएनजी के ओजी वाले कोई ओजी काम ना ना कर रही ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੋਲੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮੋਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ पर फिर भी वेरी नाइस नाइस ही अपनी टीम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਟੌਪ 2 ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ And Gen G win the last match of the day yesterday and the first match today, and they did it in style, Max, man. This Wolves push, though, I don't know what these guys were thinking here at the end. He got went a bit too crazy mode there, okay? He went sick a bit too much. I fully agree with John and Blank what they were saying. This game, they definitely did at some point they risk that win, but you know what, Gen G? It's a back-to-back win. This is the year of Mina for PMGC. Yeah, as many units as they got, I don't think they really care that much, right? Dami with 1,000 damage, and what is that? Hang on, quick math here. 11 eliminations off the top of that one as well. So huge game for Gen G, and honestly, this is one of the teams that we highlighted at the top of the show because, you know, they won the last match of Miramar yesterday, and we were like, okay, which teams in that mid-pack do we think could really push into that top 3, right? I was like, Gen G looked good there towards the end, and then bam, they come out swinging in this rondo. What was that? Yeah, 11 eliminations? No, yeah, that's way more. Yeah, we got a whole bunch here. Yeah, you got Dami here with 5. Analyst math. Analyst math. I was like, wait, what's going on here? No, these guys went crazy here in this one. And another team that went crazy off the rip, we heard an interview with 7, was the Falcons. I don't know what to say about this. This was bad, and they sent every single player into Neops, and they didn't have a When you have that recall ability on a map that is going to give you the most possibility of eliminations of वो दोनों को ले गया नाइस दोनों को ले गया देखा निकल के I'm going to be kind of harsh here. I have no idea what they were thinking. This recall. हाँ
रैंगल रुंगल से कर दे। Reject doesn't pick things up, they're going to be right there, you know, just trying to get past that bottom five. And especially when you got teams putting up as many points here in this game. Look how top heavy these points are, Niptura. Yeah, I mean, it's so नहीं जड़ी सारी अल्फा टीम है ना उन्हें इंदा 0-1 elimination that is insane, right? There's फर्क just भी so नहीं चले many आज points being grabbed here by so many teams across the map coming in here, and 25 points for Gen G. Secure this win. Claws, Niptura. Kar98, I know you were getting hyper about that one. That man with the long-range sniper was popping off. He really was, and Gen G in general are popping off. Rondo, and that's like that, Hot Jukes. Can they hold down the fort? Can they remain in top 3 for the entirety of Group Green? I mean, we had the question for Inner Circle, right? APG बहुत अच्छी टीम है. That's how crazy it is, right? I was like, oh, they got a little point sponge. As long as they do okay, they should hold on at least for a little while. But just like that, boom, Gen G overtakes them. And so that jump, you know, that we were talking about from 11th to 2nd place, it's still possible. There's plenty of games left to go, so a lot of different squads can accomplish that, right? But getting back-to-back chicken dinners in a lobby like this is going to be pretty tough, Max, man. Yeah, it's going to be a tough one, of course. I mean, the lobby has leveled up significantly. I can already see in the first game here, Niptura, teams are maybe a little bit more sweaty. Just saying, it's like, whoa, wow, we're seeing some rotations that are looking pretty good for some teams holding off, desk camping a little bit. We can say the C word, you know, the camping a little bit at the end of this game. He's able to get himself some extra placement points, snatch away a 2nd place. Always really happy to see that come through. I was really happy in particular with GS, right? Trying to hold off Reject on that wide rotation of Jadina. They knew that was going to be potentially a weakness of theirs, and they just set up the bridge camp in Jadina City itself. Great opening थी ना, great opening तो साली बढ़ गई रात को हमारी. Initiating a bit of an ascent in the mid. Yeah, sneak attack 1000. I also have to Great shout out opening तो बढ़ गई भाई. तो कुछ बड़ सबको गंदी great opening गई है तेरी साइड की. going back-to-back over. मैंने तो कहा था ना, मैंने कहा था वो उसका वो टोकन ही नहीं निकलता भाई. वो निकल जाता है, इस बार ही नहीं निकला. लास्ट टाइम भी मैंने M16A4 निकाली थी, साला दूसरे तीसरे स्पिन निकल आया था. मेरे 3-4 स्पिन में 4 निकल आए थे पिछली बार, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल नहीं निकलता, क्योंकि ज्यादा फायर आर्म होती है ना. तो एक भी नहीं निकला भाई. वो टोकन ही करके मैंने 2 गने निकाली. साला 10-12 हजार यूसी, 12-13 हजार 12,000 यूसी बचाइए. अभी इसमें और अभी इससे कोई क्रेट ओपनिंग नहीं करूंगा, इससे सिर्फ मटेरियल ही खरीदूंगा. हो गया मैच दूसरा स्टार्ट. ठीक है गाइस, अरे नहीं, कौन सी गन निकाली है बली भाई? स्कारन और बैरल निकाली है. अजय लवा देना कितनी टाइम मटेरियल कितने जमा किए? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ रैंगल? हाँ जी नागरा साहब, लाइव स्ट्रीम चल रही है ना. लाइव स्ट्रीम में दिक्कत कर रही कोई हमसे? नहीं सही चल रही. Those colors are tetrahedrons, right? They're not spheres. Last time I checked. Yes. Max. You asking me a math geometry question? They're triangles, not circles. बस 32 मटेरियल हुए. मैं तेरे को बोला ना, मैं कुछ भी नहीं अच्छा निकला उसमें से. कितना यूसी लगा वाले साहब? 13,000 यूसी. जो तो स्कार निकली सिर्फ. कारल से बैरल भाई यार महंगी नहीं महंगियां, बहुत महंगी है. साडा ते असल साइबर वीक ते साडा बना हो गया. मैं ते बचाई ले गया. 2-2.5 हजार चीज निपट गया. सर करने पाए. मेरी कारल 130-35 पे ਉਹ ਹੋਈ ਨਾ ਰੈਡੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ 130-35 ਲਾਤੇ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ 250 ਦੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ. ਅੱਜ ਭੈਣ ਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ. ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 140 ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੜ ਗਿਆ. वो भी फ्रंट. عشان شوي عندكم مشاكل لانه عندكم सौरभ है. सौरभ हम दे लाला गेम तो सौरभ वेट करदा ही.
हाँ मैं फिर लगाऊं गेम लगा तो गेम लगा جدا قاهر الفريق يعني पक्का يواجه इजाजत है لازم मुझे يكون موجود हाँ اكيد पक्का इजाजत है ولكن لعلها خير يا رب العالمين بان يعني دخلوا معانا كلاوس وكويك صراحه جدا OG وقتوا ਦੀ فيهم ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ صراحه ਦੇ He said ਉਮੀਦ that, ਤੇ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ he ਉਤਰਦੇ didn't have a single scrim with ओके ओके अल्लाह हाफिज ਹਾਫਿਜ਼ and Quick because they are standing in. ना He wishes that he had his team Yusuf with him, but they came in. They're doing really well. ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਟਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ Well, I mean, you've been able to ਇੰਡੀਆ get 'ਚ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ what has been the biggest change for the squad. वही गल है ना وكل وجهه 10 قتلى 10 بوينتس واكثر شو التغيير صار؟ دائما اذا جبنا تشيكن باخر يوم معروف جنجي اذا جابوا تشيكن باخر يوم باليوم الاول اليوم الثاني يدخلوا بفورمه قويه وبصراحه تغير يعني اشياء الكوتش نايت يعني ثانك يو كوتش ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਈਫਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ He is one of the most experienced coaches. His fifth PMGC, if I'm not mistaken. Congratulations, Santos. I like seeing this man smile. And ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਲਾ ਲਓ the world because Mina has been ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਈਫਾਈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ Mina is crushing it. Are you kidding me? I mean, look at that. I mean, I guess these are the scrims for Gen G. I mean, who needs them, Max? scrims for Mina right now. All right, they scrim. All right, we're just scrimming for the finals. That was it. That's what they were. ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਲ ਪਾਉਂਗਾ But yeah, it's crazy that they're that successful actually right now. Knowing that of course they have 2 newer additions. ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਰੀ They're looking really good. Their synergy was on point. Sure, they played a little bit split this previous game at the ending in that compound, but man, Gen G impressing me a lot after what they did in Mina. Yeah, and that quick flick by Quick over for the last Alim, right, to win the match is really, really impressed me as well. So definitely some big skill coming in here. I'm just रैंगल लगना है scrim with him like that. That level of synergy with ਹੁਣ ਰੈਂਗਲ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਮੈਚ 2 new players is unheard of. So तीन रैंगल लगने फिर 2 मेरा पार PMGC of all places. That's how you get it done. ਪਰ ਰੈਂਗਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਮੈਚ When the time comes here, you got to be able to settle those nerves and hit those shots. We got the first match of Arengale coming up right here, right now. Match number 2. Let's take it on over to John and Blake. चलो जी उठ गया जहाज Absolutely banging to get into. ਜਹਾਜ਼ ਦਾਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ From the northwest side of the map, as we head on over Zaki. Nobody dropping out yet because the playing path hasn't opened its doors. ਜਦੋਂ 10 ਮੈਚ ਪਏ ਨਾ ਤੇ 3 ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ 5-7 ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ To say the least over that last match, but Gen G are getting straight back into it. They're out the playing path. ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Mina has been doing very, very well, right? I think maybe slightly. ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਜਲਦੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਲੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ There is just some worrying moments. I mean, is all. I do want the ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਰੇ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਰੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਾਫੀ ਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ and into day 3. It's just some of the things that I want to see shored up. But not to say because like I think also ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੀ ਆ they are very, very good at navigating some of these rotations, some of these circles. I think it's some of that decision making towards the end game that could be doing with shored up. And it's obviously because they're coming up 2 chickens. I want teams to succeed, but I try and figure out where the problems are. That's what I'm doing. Well, that's hey, it's kind of what you're paid for a little bit. Doc though, hoping to get paid. Bounty on Bond's head as he goes for the serpentine, but ends up sticking it into a barrel. Not ideal. Bond now able to get into a building, and that's going to be APG diverting. You don't want to stick around too long. Too much time, especially when you don't have a weapon. ये स्नाइपर मार के लुआ ले रहे हैं 4 आ जाएगी. APG, they'll be moving on.
and stay safe. You can hear those bullets already pinging off the back tire. I will say it was pretty bold of Bond to try and knife Doc whilst he was in the vehicle. I don't know if he caught that, but as he swung past him on the side, he actually tried to go for the slice of the Doc. हाँ कोना कर ले इतने था. I mean, you get what you got to get done there. I mean, any little damage helps. Once we go over towards the Povka, quite a empty circle to start things off here. D plus just towards the south side of Rozhok. And for D plus, some of those rotations have been a little awkward at times, but again, they are fixing mistakes. They are improving, but they need to get way more points now towards the end of the day to try and see themselves in towards the top 3. Main point contention right now is just not to be down towards the bottom of the tables. That bottom 5 will be going out right now. It is OG Falcons, GS Reject, as well as Team Secret, who are in danger at the moment. To be honest with you, for OG, right, a lot of the rotations are pretty slick, right? And I definitely wouldn't hesitate to say again, this is probably some of the best rotations we've seen from India as a region in a long while. Their issue just lies in firepower. That's it. That's really it. I think, honestly, in terms of international performance, rotation-wise, getting into a strong position, OG's great here. Really good. It's that confidence game in the 4v4s where they're kind of lacking on right now. I think most people have said it quite clearly online, which is a case of कल ही टीम पे आज पूरा जैसे रहा उठा दिया. power is the thing holding them back. But what I don't see a lot of 9G smart gameplay and strong rotations coming out from the squad, which is a little frustrating for me, honestly, because I do think that there's now like a lot of hope being put on true rippers over in Group Red. And the idea is that their firepower is going to be the thing that carries them through. But yeah, I think it is undeniable that OG right now have some of the best rotations. In fact, the best rotations coming out of India in almost forever. I mean, yeah, it seems like it's much more mature than obviously the earlier days of within the PUBG Mobile scene when India had their sort of region there. But certainly since their reintroduction to the Pmgc ecosystem, the Pmgc ecosystem as well, it's looking a lot better. Unfortunately, they haven't been able to find too much success in this group so far, but there is still more games to play, and hopefully those rotations can be brought to bear forward. On the other hand, I mean, your Falcons underneath them, you know, are a star-studded squad, and right now they don't look like that. You know, the stars are missing. It is a complete. जिन्नियां गड्डियां दे जो चलदियां पा जो नॉर्मल आही जेड़ा अल्टीमेट जां ओ खेड दे ओदे जो चलदियां हुन ते गेम साली चले ही ना मेरी ते. Not the case. Something stifling them at the moment. Ralph said it was some of those initial rotates which they are struggling on. And already they had a much better performance over on Rondo in terms of early game, but they need some more of that late game presence. Is definitely going to be needed. I mean, those later games are really where you start to pick up a lot of points. As we said before, right, at the early stages, you could survive 15 minutes. That's not a guarantee of any points at all. You can survive 20 minutes. The same thing is true. It's when you start to get in towards those next few minutes that really start to matter, and having that power into the late game, that huge points earnings potentials starts to appear for our teams. Which is why average survival time, I mean, it's an interesting statistic, but it can sometimes be a bit misleading. You think, oh, that's only a minute difference, right? That's basically the same. When you're talking about end games, that is a huge amount of points difference that is earned. And you can almost take off the first 20 minutes of that average and then do that sort of comparison. And you get a better picture of just how strong a team is of moving into that late game. Yeah, I think I looked at before, and I think the difference between like बहुत जड़ियां कंपनीज या बहुत ज़्यादा ब्रांड है ना स्पॉन्सर कर दिया 40 points. टूर्नामेंट है. It's kind of crazy, actually.
the amount of points gain you get. किसी ने बड़ी साल सोचा भी है यार 10 साल पहले कि एक फोन दी गेम But it is specifically over the 20-minute ये mark हाइप where क्रिएट things करूंगी start to change a lot. But so far, some of our teams are definitely getting towards that 20-minute mark, but just not quite beyond into the 23-24 position. At that point, even if you do get that far, you go out in, say, 8th, 7th, only one placement point, or not even one placement point, drop out an 8th. Right? It's definitely difficult. Definitely difficult. APG making their stop off. Wolves no longer really playing around this position anymore. It used to keep a scout down towards the south side in Baton. But honestly, Baton was getting battered quite frequently by APG as they would just send direct into that gas station. And I think this is the right choice from the Wolves, which is just to play as a 4-man up towards that north side and just give up playing down towards the south. कोई फायदा नहीं आ रहा It makes a lot more sense. बस तो होना Obviously moved up दाड़ दाड़ी चलने हैं हम even battered still as an outpost, but over towards Sunken this time. क्लोज ही ना हो रहे सारी टीम Yaz fields. We haven't really had too many keep those Yaz fields in. That position that OG hold right now, a little bit of a command spot over the Yaz fields. Leaving it to the south may be a bit tricky. Maybe they want to keep more presence across some other areas. They don't want to regroup fully onto it. Leaving it entirely, I'm not sure. That would allow a team like Team Secret to fly on in past that Yaz bridge, leaving down from the north side and get a very valuable spot. So I think we keep that one under control. Yeah, it's a very difficult circle, this one. With the Yaz Lake on the north side, Yaz Fields as well. You have a lot of space that is available to play, and for most teams, they're not even thinking about playing over towards the northwest side of this circle either. So you're cramming a lot of teams into a very small area. I think this is one of the maps where, you know, stage 3, you're probably going to see 3 or 4 teams go down there. It's like Wolves have found the east point of Rosok. They have condensed onto it under the purview of loops, but they do have to potentially march a little bit further east. Good access out to the east rotate paths, though, for Wolves, and maybe actually cutting loops off a little bit, with the Falcons a little bit further out as well. Loops have fewer options than they once did. GS, they're moving in from the south side to the east of Pmgc over Potato Hill, but they've got Genji ahead of them, and they've got APG behind them, blank. So, a difficult hilltop to hold in that sort of scenario. पर ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਲੇਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I think for APG they could remain like ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੱਭਾ It's unlikely you're finding a strong position in the circle at this point where, like we said before, there's a massive amount of area that's cut out. ये ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ So many squads have already picked basically the map clean of pole positions. Alter Ego, though, I don't mind their spot on the side of Yaz 16 ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ for quite some time. ਹਾਂਜੀ For them, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਲਰ ਦੇਖ ਬਲੋ ਬਲਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ I mean, it just goes to show you ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਈ It has allowed them to do this, right? Because of what APG did yesterday, because very flexible tables Genji have been able to slingshot themselves up. That will start to happen less and less as we isolate in. A big shift out to the west, though. Let's talk about this, because we're going back to school. We're going back to apartments, the hills to the south, the position that Wolves had taken control of early on the east of Rosok. That's going to be really valuable for them as well. We're moving away from ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ Yeah, I don't think for Falcons this is like kind of their time, right? It was interesting because I think yesterday Junior was saying that honestly, the fact of the matter was that Falcons don't really know how to play from Pmgc in terms of those initial rotates, and I sort of agree with him. I think that because they are sort of center, sometimes they kind of flub the initial rotate from that position. So it's always interesting to get the opinions from the other broadcast talent.
I don't understand where they're coming from, what they think, and especially for us who've watched Falcons for quite a while, John. You know, we cover their region as well. So let's have some outside input. Yeah, absolutely. Finish. It's always good to have a fresh set of eyes, Nico. Not feeling super fresh though himself. As Papa Supermassive lose one to the Gen G roll down. Continue to make their approach towards this next circle from Potato Hill. Of course, they're already in it from that south side, but maybe they want to establish themselves more with APG breathing down their neck. Can't blame them. Reject, hoping to have a little bit better of a rotational set than last match. With Alter Ego right there, that's going to be very tricky. Let's get a move on, but already a lot of shots raining down on them. We'll just have to get away. No divine intervention this game. We'll just have to send off into the distance. There's D plus down towards the southeast side though. I think the main feature here is that barren land over towards the eastern side of apartments and school, where a lot of teams are going to kind of struggle to play. And if this continues to go dead center, you sort of have that one singular tiny compound towards the middle of the map here, which is going to become very, very useful position. Right now, it's kind of rubbish. It's kind of rubbish. Not many teams want to play it, but if we do keep heading center, you will see teams start to fight over that position. And a lot of times with those circles, you can see 2 or 3 teams playing apartments towards the end game. That's potential to get a little bit chock-a-block in that zone. We'll see where the next circle's going though, because we're about 10 seconds away from finding out. E plus holding out on the southeast side, still fending off in the area. And that's a Gen G. He's just going to get punished, and it's not going to be happy. A north side shift here though, Blank, and the Wolves just keep getting happier. OG as well on the north side, Top Secret, who felt like maybe they'd had to move probably about in the last 3 circles. And again, can go a little bit slower, but their approach is still very much difficult. Upper Supermassive making a quick rotate out. That's from the south side, trying to pass by Gen G. And currently are under the purview of GS. Now for the Falcons, they do have a fairly decent position right now, yeah, but I think they need to regroup. I think they absolutely need to regroup. This is a big old test for Narvalo here. Cannot quite find the second. Cohen needs to be successful on this one. Oh, does not connect with any of those shotgun shells. And Papra Supermassive, they sweep the leg. The Falcons stayed split too long, and Papra Supermassive all too happy to add those points to their tally. It's just disappointing on their performance here, and nade in for Alter Ego, who have crashed into this compound that generally is sort of nigh on unassailable. They haven't got a flush just yet, but Krypton going to keep the nades rolling. Quite connect on this one, and the res is starting to come through now. Rosemary breaching forward, Snape as well. AKOP on the door, they drop the smokes, trying to play a little bit of business. Back up, but an immediate re-knock on his teammate. Alva gets the nade onto the off angle too. Wiscott to the upstairs. AKOP looking to try and stay alive, but they are just falling. Alter Ego handling every fight as they come, and then now it's just Wiscott. Nade on the inside. Shot to the feet, making him dance. Shit, yeah. Once again, yeah, 0 elimination here. I don't understand why there's not an immediate regroup coming through from the Falcons over towards L block, or regrouping with the 2 players on the northeast side. In my opinion, regrouping on the northeast side would have been a way better scenario to go for. There's very minimal areas to play here. You know that everyone is gonna want a little bit of L block. It's just, it's greedy, but I don't even think it's greedy from Falcons. I think it's just slow, honestly. I think that they're slow to figure out what they want to do next. They don't regroup in time. And by the time they're thinking, maybe we should get back as a 4-man, they're already assailed by other teams. So, yeah, the decision-making needs to be quicker there. Tiamba up against Team Secret. But just one player in Aching left alive. Good shots from him with the S12, but has to reload. Off though, and now it's a 1 versus 1. Low HP, sure. Loki dancing around
around the door frame here in a 1v1 as the fight in the middle actually popping off as well. You can see the picture-in-picture. That's GS crashing in. Gen G have been dismantled in the meantime. Papra Supermassive, they've been there for a while. बहुत जबरदस्त यार बन भी Just that two-team fight. Papra Supermassive looking to hold off their ओपी यार against GS, who जबरदस्त लड़के crash in there. The 1v1 does conclude though. now the third party आ चुकी है भाई Aching with the 1v3. That's crazy. But Alter Ego now yet again give him another marker, another challenge to solve. And I think it's very unlikely he gets out of this one alive. Alter Ego will pick up this position. वो गंदी पार्टी है साले में This is Team Secret. And Team Secret's having a horrible time of it currently in 16th place. Papra Supermassive right now versus GS. DS3 will find one up the stairs. They already have done a lot of damage to Papra Supermassive. We saw them crash into the remnants of Gem G. We've seen them now take on the majority of Papra Supermassive. But both Jafar and Icon are down. Shots come through actually from Redox from the Falcons. Even as two, they do still have a very solid central position. And now, oh my goodness me, in a circle. They've just careened into the side that GS took earlier. Maybe they can keep this one going. They have got the three players up and in to fight against GS's three with Jafar going down to the flush. For Inner Circle, it's been a long and tumultuous journey to this position, but I think this is the right time to try and assault over towards L Block. You get to the point where, honestly, you see a lot of fights have concluded over here. Finally, things start to die down, and as you hear those final shots ring out, that's when you look to send in. I think it's a smart maneuver. But there's a good hold on the staircase. Nice, Gets the flush immediately. Is in a circle, lose another player here, and I wonder if they're aware of Kamikaze on the outside. I don't think they necessarily are. They may have not spotted that one across the way. They rocked up to the fight a little bit later, so maybe Kamikaze allowed to stay alive a little bit longer. APG struggle on the hilltop. I say struggle, not really. Divine was the last to stand for Reject, and he will fall. That res should be okay. Will go take an angle to it though, or are they going to be more preoccupied getting towards that Falcon duo? Yeah, Doc is obsessed with running players over. Honestly, it's happened, I think, 4 times now. I think he's definitely got the highest amount of vehicle eliminations in the entire game. He's trying to set a little bit of a record or something. Killer Joe underneath. APG, with the 4 players they have playing on this ridge side, then get rid of Go. They have a much better time of it. Though APG actually do struggle versus Go. Go has surprisingly good firepower in the 4v4. Already though, Rosemary's making things very hard on this angle over towards the north side. Takes down Reefus. And they're penned in. Falak as well on this off angle. APG suffering. And once again, do you know why, John? It is because they do not respect sightlines. It's the Rosemary sightline, you're right, over towards Falak as well. That really has stalled them in this fight, and now it should be easy pickings for Go to just roll on over. They fall, and they have sort of met their mark of getting about 5 points average per match today so far. They have got a couple on board, maybe a little bit shorter than they would have liked. But now it's the time for Go to move as the circle pops. We're going north. I mean, this is Alter Ego's time, right? This is their chance to really go for something big here. Post themselves up to maybe even challenge towards that top spot, right? With APG going down on 99, they could get pretty close on this match. Well, they could. But again, I'm seeing 4 players split across the entirety of the north side. It's worrying. I think it's one of the few times where actually it's pretty good. It does work. There's a lot of positions to play from. Still, they're just scared. You know, I would like a slight regroup towards the end game. God, it's frustrating having to expend another nade there. That should do the trick. Snake ball taken down. Hey, third point. I see we चौथे नंबर चल गई यार. The stocks are still pretty high. 11 evens on the game on an angle is very, very nice. It's just the amount of times they've been in this situation. I feel like Alter Ego could be on a very similar scoreline to APG if they had just regrouped a little earlier in a couple of these matches. Kamikaze, he sacrifices a lot of his health bar, but he takes the hovercraft that was delivered earlier by Inner Circle. It's
going to pop it through, see where he can get a big block in the way of gunfire as well. So he's going to rock forwards. He's just going to play behind it. The nades from IC going to immediately try and take this thing out. Go a little bit longer. Kamikaze needs to stay. No, he's not going to do it. Falak lands the nade. Needed more health. Needed more healing. A nice idea, but I feel like maybe the buggy not in the blue zone would have been a little bit better. I mean, you want the maneuverable cover, right? At this stage of the game, having that is great, but in comes Go over towards Falcons, the two final players remaining. If they're able to get this 2v4, you know, it's a fourth place. That's actually fairly good in terms of a salvage, but it's not looking likely. They've taken down one already. Last player for the Falcons. No, last player for the Falcons gone. They will be eliminated in 5th place, but Wolves are actually chiming in. This is a really difficult compound to play with, Blank, but 2 knocks already found towards Go. That is huge. What a pickup. And Wolves are going to storm down the gates. Alter Ego lining up on the north side. All too happy to let this one go through, but always caught in the corner. Doran is just going to get caught by surprise there for the Wolves, and that's going to be nasty. The Wolves down to 1 player, by the way. And honestly, takes a lot of damage. The 2v4 is real. And Wix and Kraken's able to finish it off. Horrible sneaky maneuver. The assassin in the corner. It does work out, though. And Alter Ego on their lineup. Again, I think for the Wolves, though, honestly, that was the right time. That was the good call. Is that you want the high ground compound with the walls surrounding it. You hear the third party pop off, and I think you just have to say to yourself, we got to go there. We have to go. So well played to Wolves. Sad it doesn't work out. I think Go just has some extremely good clutch potential in these engagements. IC versus Alter Ego, who are currently very split. I think that they do have the manpower to make this work, though, with only 2 teams with 2 players on side. Not if Snape goes down, though. He's just about staying alive. Rosemary is immediately there, just in case. I don't think, yeah, there's only 2 nades left on side for Inner Circle. Wakes up on the rooftop, able to find the first. The nade from Rosemary steals the Elim away. It's not going to go into the goat bank. Falak's left alone. And he will be no more. Rosemary lands another nade. And 8 nades on side. 4 Alter Ego. The 4 players alive. The 19 smokes. I mean, for goat, this is a really, really difficult task. Okay, I'm actually okay with this. They're playing a little slower, right? And they're also playing... They're playing a little bit slower. They're playing 2 and 2, making sure that one player is always alive to pick up the other. So there definitely is some considerations to what occurred yesterday. Rosemary on the roof. Oh, he's immediately catapulted himself up there. I mean, you said they wanted to play slow. No, Rosemary, yeah, it's a nice ROP though. All right, okay, go take the points away from Alter Ego's tally. They don't want them to challenge for that first place, but I think that's what, like a 21, 22, maybe 23 point game for Alter Ego. That's going to put them up in the high 80s, Blank. They're going to be having a good time of things. That will put them in the top 3. The question is, how close to APG can they continue to get? I'm so confused by the denial coming through. It's kind of BM, if I'm honest. An international like this. I mean, also if you just get 1 nade, also. Hi, Rose, क्या हाल चाल कैसा? The 2v4 versus Wolves. What's to say they can't do it again versus Alter Ego? Somewhat confusing, but yeah, there you go. But for Alter Ego, I think there was marginal improvement, right? In terms of the way they played out those final moments. There was a lot of 1-man splits before yesterday. This time around, there was a lot more consideration to having someone as a backup to res, if needs be, who was outside of sidelines. So very well done. Yeah, excellent stuff for Alter Ego to close that one down. They'll find the chicken dinner, put themselves in a better spot. Let's head to the analyst desk. मैं भी बहुत सुमित
is the first chicken dinner from an Indonesian team in the PUBG Mobile Global Championships. And man, could it not have happened at a better time. First off, we got to talk about this buggy play from Rosemary, Max, man. Oh my gosh. He ends up launching himself onto the roof. Goat heard him on there, and they were like, you know what? Let's get out of this game. Let's go to match number 2. Let's see it. Calculation happening. Yes. Trajectory on point. Oh no, slow down. Okay, wait. Now trajectory on point. Come back. And perfect landing. And Goat just like, that was too good. Nay, that was so snap. I can't believe they denied. They didn't even try, Hardukes, to take the 2v4. Like, no, that was too cool. We surrender. Too cool, dude. Oh my goodness. That is ridiculous. And look at these points, these stats. I don't know. That was insane, Neptune. क्या है भाई इंडिया टीम से कर रही है पूरी लस्सी के नाल and able to back it up with so many eliminations, right? I love how methodical they were in every single stage of that end fight. पूरी Right? एलिमिनेशन कर They दी were है looking towards the whole big thing with Goat and Wolves and all of that, and then they also knew IC was on their side. They decided, no, we're going to leave that fight alone. We're going to go to IC, get rid of them, then we can decide what we're going to do from there. It was really, really nicely played. जरे एलिमिनेशन कोई चिकन नहीं कोई कुछ नहीं Chicken dinner, right? And it all लस्सी दे लस्सी दे लस्सी दे लस्सी दे लस्सी दे लस्सी OG get gifted the circle there in such a dominant position. And what would have happened if OG ended up winning that fight with AE, right? I mean, they could have possibly got a lot of points. What do you think about that defense from OG in that play, Niptura? I'm so annoyed because that zone, the way that zone shifted and their position in it, played right into their hand. That's exactly what they've been waiting for the entire gauntlet stage. They wanted that big split on the north side, on the edge, open ground, love it. But they just sat there. They were like, oh, we got the zone, and didn't do a thing about it. They didn't try at all. And so AE were just able to run them over, run them down. I mean, if OG wanted to give them the compound and, you know, regroup to the hills, I'd have been fine with that, because at least they're playing the game. But for some reason, they just crumbled, and it's so unfortunate, because they could have won with this. If they had played like Alter Ego, they would have won their first game. I mean, you can see at the end of this game then in the recaps, after that fight was won against Orangutan, Alter Ego just start completely controlling the entirety of this circle. There's not much that can really happen, though. Wolves and Goat fight. We saw that Hodgix at one point, they didn't check the bush angle behind the wall. It was Twix, he was hiding in the shadows, and that completely destroys the push of Wolves, despite it being, I think, timing-wise, perfect. It was so well timed out from Wolves, but unfortunately didn't quite work out as you go through the game recaps. And I just want everyone to pay attention to the boys of Inner Circle. They dropped Zaki. Apparently, I didn't even... Okay, that's an interesting one. They dropped Zaki on early rotation. They send it over to Heaven to the eastern side on a big, wide northern rotation, which I do like. They go there on phase 2, I do believe. Here, they snatch away that position out of the hands of Alter Ego. Boom. There you go. Right into Heaven. And then the circle just hates Inner Circle. It's like, oh, we go to the western side. Inner Circle, very smart. Wide southern rotation all around, next to Pachinki, into school. Good entry point to the west, eastern shift. I mean, there's a certain point where just the RNG is not working in your favor, and in this case, Inner Circle were done dirty by the zone. Oh my gosh, they were I feel like we need some of that meme music, right? While they're trying to chase that circle, because it was brutal. But yeah, you just saw right there, Alter Ego. Once they got that push on OG, they just dominated the zone, Neptura. They really, really did. I love the split that we saw coming out from them, just making sure that no angle, no stone was left unturned. And the result is 23 points. I mean, far ahead of even Goat, who had a great game today in this wrangle, right? 13 points, 10-point difference just because of the control they were able to grab. And it's just crazy how one team can come out and dominate the whole thing, because if you look down the leaderboards of these stats, not bad points, right? 11 for IC, Wolves getting 7 points. I mean, that's a pretty average game, but for AE to come out and just get 23, now the rest of them are like, oh, you got single-digit, you know, points. That's kind of bad. No, it's not. AE just too good. Yeah, we actually seen some good points for some bottom squads. I mean, Tiamba, Team Falcon's getting a few points down there, trying to... Just leaving the bottom 5 is already a win in itself. If you can go even high, if you can try and contest top 3 at the end of today or in tomorrow's 6 matches, even better. But right now, you just want to be out of that bottom danger zone in the bottom 5. As the MVP of the game is Alva, even though
I would have to say it's all Alva's the MVP or the Buggy's the MVP with Rosemary. Yeah. Those Buggy plays were clean. Yeah. It's been a long time since I've seen a team just nade themselves because of how sick that Buggy play was, right? Some person driving. That's how you know it was just sweet, sweet victory there. By the way, I do want to talk about that point you talked about earlier, Max Man, right? With the Wolves, right? When they did that push onto GOAT. As soon as I saw that push, I wish you guys could have heard because I was screaming. I was like, check that corner. There's always a person in that corner. And they got taken out from there. But look, Alter Ego now going to second place. Gen G go down to fourth place. And one team I definitely got to talk about here, Neptuna, right, is 9Z. They have gone all the way down to seventh from third. That is a crazy stat. They had a really strong day yesterday, fairly quiet compared to maybe, you know, the big games of APG and IC and all of those folks. But 9Z were able to be so consistent. 20 placement points, 30 eliminations. That's exactly what you want to see when it comes to those points. But today, they've just struggled so much. I think in this last game, they got 0 points. So now, especially as we, you know, start shifting into the halfway point of Group Green, right? That is not the time to be slowing down, Jukes. Not at all. They need to now step up in these next 2 Erangel games. They got to bring it all because they are in danger of losing it. And I'm still waiting for that Papara Supermassive Blaze win. We have yet to see it. They got 14 placement points total over the course of all those games. That is quite a low placement point average. And they have 41 eliminations, which is comparable to some of our top teams here, Hot Jukes. Papara Supermassive Blaze, I need to see a solid late game finish from this team. Not even a win, just a good top 3 placement points on board. As of right now, Papara Supermassive Blaze are really struggling to go from mid game into the late game. If they can work on that, I'm telling you, they could do a catch up for the top 3. Yeah, and you know what? I mean, a lot of teams are catching up to those top 3. I mean, we've seen, you know, the second place and third place getting swapped around like crazy here off the rip. You know, we still have Alpha Gaming there in first place, okay? Right? Now, just to remind you guys, at the start of the day, they had a 44-point lead, right? That's from that fourth place position, Max, right? After these games, they are now down to 32 points. So they still got a buffer, right? But these teams are catching up to them. Yeah, I mean, they had such a big point lead, they can afford to have some bad games, but how many bad games can you really have? We'll have to see how the days goes forward for Alpha Gaming, but I'm telling you, with what is being brought to the table by Alter Ego Gen G, you might want to try and play it safe. Scenarios, as of right now, it's not the case. By the way, top 4 players, despite a huge game from Alter Ego, Nipchura, Falak, doing Falak things. He's #1 on top. Good job. Falak always doing the thing. Even if it's not a win, he's still on top. 5 eliminations. So bringing in a lot of points for the team. So a really nice show for them. And they're just keeping in that top 3. We did say they're in danger of dropping out the top 3 in this game. And they just did just enough just to stay ahead of the curve. So nice job for them. Yeah, I mean, we talked about the rotation for Inner Circle. IQ in particular, great job with those macro rotations here, adapting to that circle. I said it, Hot Jukes, the circle was not friendly to Inner Circle, but IQ as an IGL was just 10,000 IQ in this game, so really, really happy with this performance. Oh, yeah, I mean, that's the one thing that I love about that graphic, right? Because it just shows that, you know what, they didn't get gifted the zone. We're not expecting a crazy 20-point game from them, but we see them at the top of the leaderboards because that's the ticket, right? In order to be top 3, when you don't get zone, you gotta put up points. Falak putting up 5 regardless, even though they were chasing the zone the whole game. That just shows how built different they are from the rest of this lobby. In my opinion, Max, and I said this earlier, day 2 is really just trying to secure that top 3. For me, the last day is about just surviving, right? Trying to get out of top 5. So, you know, what other teams here, right, as we go into that mid-pack range, you talk about Papara Supermassive Blaze, right? We see a pop-off, you know, from D+ here in this next game. Wolves, what are you thinking? I actually wanted to talk about D+. I'm like, I want to see a comeback from D+. They were in the middle of the leaderboards. I think they were in 8th position at the start today. Still haven't seen anything, except like maybe one good fight versus Orangutan earlier today on that Rondo match. What's happening to D+, the reigning champions? We need to see them in the finals. They want to try and defend their title, their trophy. But as of right now, D+, you know what, at this point, where they have not shown anything of true value this entire group stage, and which is very unlike them.
Yeah, I think if it was ये any का other रैंक team भी at 12 this 16 point, चल we रहा would है kind of be not देखो क्या discounting करते them, हैं but kind of going, okay, they're not doing what they need to do, and so we need to look at some other teams, right? But because they won PMGC in its ਇਹਨਾਂ entirety last year, ਨੂੰ because ਚਾਹੀਦਾ we ਆ know how good they are, we keep hoping ਸ਼ੁਰੂ against ਚ ਹੀ hope that, ਫਾਈਟ listen, ਫੂਟ we're ਲੈ not ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਨਾਲ poking them and going, hey, come on, ਜਿੱਥੇ let's ਉਤਰਦੇ ਨਾ फिर ਲਾਗੇ खेल ਬੰਦੇ से कर लेना right? 1v1 ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰ ਵੀ ਜੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ successful, and somehow for some reason it's just not ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ working. So I ਗੇਮ don't ਜਾਂ really ਤੇ know ਕੱਢਣ what ਨਾ ਹੁਣ needs ਉਹ to happen. I think it's very ਜੋ similar ਉਹਨਾਂ ਦੀ actually ਟੀਮ to kind of ਕਿੰਨੀ like ਵਧੀਆ Falcons or ਖੇਡੀ one ਹੈ of those ਇੰਡੀਆ teams ਦੇ where we're just not seeing them really ਹੁਣ survive ਪਹਿਲਾਂ the ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ late ਦੀ game, ਟੀਮ and then if they ਦੀ do ਪਾਕਿਸਤਾਨ survive, ਦੀ it's by ਟੀਮ being ਹੈ very passive ਉਹ and ਦੋ ਜਣੇ ਬਚੇ ਹੀ ਆ staying ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ on ਦੇਖ ਲੈ their ਇੰਨੀ own. And ਗੰਦੀ then when ਥਾਂ it ਤੇ comes to ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ actually ਨੇੜ ਆਏ that point of, hey, ਮਰਨਾ we ਤੇ want ਹੀ to ਫਿਰ ਵੀ take ਕਿੰਨਾ more ਸਰਵਾਈਵ aggressive ਕਰ ਗਏ points to ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ start ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ creating space for ourselves, they just aren't able to flip ਇਹਨਾਂ that ਤੇ ਭੈਣ switch and ਰਸ਼ go, ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ okay, ਪੂਰੀ now ਟੀਮ it's ਡਿੱਗ time to ਜਾਂਦੀ ਹੈ turn on the ਇੰਨੀ aggression. ਜਲਦੀ And ਸਾਡੇ for ਉੱਤੇ a team like ਲੋਕਲ DPC, ਮੈਚ yeah, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ that's ਬੰਦਾ what they're ਮਰਦਾ looking at. ਨੋਰਮਲ It is ਰੈਂਗਲ very odd. ਖੇਡਦੇ You ਆ know what? I have a question actually, Hot Jukes, for you. Okay, You're bring going to be it analyst now. You know what? I'm putting Let's you on the go. spot. Wolves, with what you've seen so far, do you think top 3 is achievable for them? Because I feel like we've seen some little minute mistakes that are being made that might cost them the top 3 position. But what are your thoughts on your boys from Americas? I will say this, right? I pray and hope we see them in the grand finals, right? Prior to this tournament starting, I said this and I still believe it after watching these past few games. ਨੋ I ਮੈਚ think the ਹੋ ਰਿਹਾ Wolves ਬੰਦੇ ਦੇ can ਪੁੱਤਰ make ਬਣ it ਕੇ to ਖੇਡਣ the ਨਾਲ ਤੇ grand finals, ਕੁਝ ਕਰ but it's going to ਸਕਦੇ require a lot of zone luck. And the reason being is, I think the Wolves can put up some big points. They can put up those chicken dinners, but they haven't proved to me that consistency to be able to do so no matter what. And the reason why is because of the gauntlet, right? They won the Rondo in the last day. I thought they were locked in for the grand finals to get top 7, right? And then the next 3 Aaron Gales in a row, nothing. And that is why they're here in the first place. So with how this lobby's going, Max, it's going to be tough. That's for sure. I just remember that fight with Geek Xavier on that final Miramar during the gauntlet stage. That was just heartbreaking to see, unfortunately, for the side of Wolves. But you know what? They got to go through this tough section here, through the group stage of PMGC. There's still an opportunity, currently standing in 8th position. Not too far away from top 3. One win would allow them to play comeback here, Hot Juice, so there's definitely still hope for this squad. Well, they better do it right here, right now, because they do not want to be having to hunt them down in the last day like they did in the gauntlet. Let's see what happens, though, as we get into our final Aaron Gale of the day with our casters, Blank and John Allen. We've got another Erangel to play, Blank. We're heading in again to the grassy pastures as the day keeps on delivering. We had a pretty crazy round up there. We're just about to pass the halfway mark on Group Green as well, as our plane path cuts us up to the north side of the island. I mean, it's not too bad, honestly, for most squads. This is very much even across the top of the map, through to the Povga, and just cutting straight past Rozok. So a really, really quite easy playing path for every single team available. This gives you decent position. हेलो आवाज नहीं आ रही थी आ रही है मैं बात काट की थी ना बिल्कुल I'm still not convinced. But I see playing up there. That मैं क्या पाजी चढ़ के जा दोबारा serious dedication to जा चढ़ गया to even get themselves towards that end game, but got some decent points on the back of it. अपने वाले भैन जो किते हो ड्रॉ भी कर लेन उतर के Been able to close out on some of those end games in the past where maybe they split too wide. They could easily be ahead of Alpha Gaming right now. I mean, yeah, if they want to. You just got to want it enough, I think, you know. That's the problem, right? None of these teams want it enough to be able to jump up towards these top sides. Hard west circle, going back over to the west coastline. A lot of teams dropping out fairly late on that east coast, though. So it could be a little bit of a scrabble for vehicles. Alter Ego, yeah, they're going to be stopping off around that Lipovka Mansion split. A little bit further down coming on through as well. We'll see a few teams start to divert from one another, so no massive glut there. But actually South George is pretty occupied. Yeah, a lot of teams there. Loops, Team Secret, Gen G as well. Go down towards the south side. They have a fairly ओ जी मैं जो 12 तो 14 ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ कोई नहीं 14 तो 16 ਤੇ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ towards Gak at the moment. Papra Supermassive, a little bit quiet, honestly, over
ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ 30 30 37 38 ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਕਾ ਤਗੜਾ ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ It's better, definitely better in terms of the placement points. I mean, overall, the eliminations looked fairly decent yesterday anyway. Yeah, the placement points is definitely where they were lacking. Yeah, it's ਰੋਂਡੋ ਦਾ ਚਿਕਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਏ ਵਾਲੀ ਆ 10ਵੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾ try and keep that improvement going on, but if they're going to stick on their course right now, blank, they're in second place. They're pretty happy. They might just be able to keep their head above water that way. Of course, it is the top 3 that everyone is really keen for. There is still that last chance spot, but it's much harder to get through that way than just going through free and clear, free as a bird. That's what you'd hope for, certainly if you're an alter ego fan. APG, they did so much heavy lifting in day 1, but the start to their day 2 has been messy. And as you said before, it feels like they lost that humility that they developed during the gauntlet. Yesterday, certainly. Last 2 games were a very big factor of how that change came to be, with Doc suddenly sending off into the distance. It's always a back and forth struggle for Alpha Gaming fans, where you look at Alpha Gaming, they're doing very, very well, but you also hope they don't do too well, because as soon as they start doing insanely good stuff inside the lobby, you know they're going to start making mistakes, and that's exactly what happened towards the end of yesterday. I want humble Doc back right now. That's what we need. Yeah, for Alpha Gaming, already done quite a lot though, 99 points, but it's nowhere near as far ahead as we expected it to be coming into day 2, with Alter Ego now only 19 points behind. Nice, we will need to keep pace. As I said before, looking to get 50 points or more over the 2 days now. And they've only got 9 over the course of today so far, which is a little bit short of the mark potentially, so that turnaround needs to come on through at some point for them. Plenty of other teams would be all too willing to seize that opportunity. We've seen, I mean, like the guy on our screen right now, Pmgc, he has been a real standout so far for the games for Papra Supermassive, right? That he seems to just have this ethereal nature, this ability to land shots where you just don't expect him to. Papra Supermassive obviously very keen and happy to have him on side. Unfortunately, they're just not quite up to that 3rd place yet, but they do keep marching. They do keep going. It's interesting as well, because for Papra Supermassive, there's this weird thing where for Kamikaze to be doing so well on the international stage is strange, because Lost and Nico are typically their best players on that squad. So now knowing that there's 3 players there, all insane, by the way, and proven to be insane, why are we not translating those points in a bigger way? I think 6th place is quite successful, but we already know that this is a very volatile leaderboard at the moment. Hoping they can go a little bit further than that. I think that Erangel at the moment has been a little bit tricky for them, which again is weird because it's technically their best map. There's a lot of strange things happening in the Papra Supermassive camp. I do think they can go much further. But we'll wait and see. Right now it's a long journey for them though. Starting in Mini Milta, they would have head all the way across to the Western Island. And talking about that Western Circle, there's a bit of a bait on the plane path where it cuts so nicely across, delivered everyone towards the eastern side of the island, only to shift on back. That's something they'll be keeping their eyes out for now. As we head over Potato Hill, over Pmgc, out to the west side. It's OG moving, it's D+ moving down from Ruins. And they are going to be holding quite a decent split, but they have allowed OG to move on through, so not convincing, well, at least the forward guard for OG to move on through, so not a super convincing spot for them just at the moment. In the meantime,
wings of the teams on the east side starting to get bunched up. The west coast not super free and clear either, as Inner Circle looking to move down on the west side, but Gen G have the same idea. They're very close to one another. But Inner Circle, I mean, they have this ridge line. They have control of these buildings. It's fairly central. We'll see what they can do. Quite a few positions over on the western side which are fairly good and nice to play in. Down towards the south side is likely where a lot of teams would like the circle to end up, because it's a very clear and easy decision of where you want to go next and which compounds are very strong. Right now you've got a lot of teams bouncing around crates and South George, Hospital, south side of Everest. It's very crunched in, but fair few areas to tuck yourself away and stay alive for Zone 2, which will be coming on our screens shortly in about 20 seconds now. Alpha Gaming, Alter Ego, Falcons, all late to the party. And again, for the Falcons, it is a slow rotate out of Pmgc. I think they do have an outpost on the south side of Everest, though, which they can regroup on. Going around the area. Going to divert. They're going to regroup and go for that Rostock crossing too. You could swing past ruins over towards the north side quite easily. APG, they're looking for a spot underneath Everest. GSR up here. This is a very aggressive push, so you play over towards where the two-man split usually is. Doc stops short. The rest of GS aren't quite there yet to challenge. Needs to, well, to try and avoid them, really. APG वाले जाएंगे. Towards Wolves, who have had a knock sent their way, but they should be all right for the time being. They win the fight against Reject, and to truck on in from that southwest side. APG वाले जाएंगे. Still staying alive as well. East side, but only just. They are starting to get crunched here, and another bad game for them. It's a continuing downturn. This is Gorda APG back in action. That push as well is just APG वाले जाएंगे. गलत जगह रखे. APG absolutely knows that there's team up there playing on the 2-2 split. There's also no reason for them to go for it. With the circle moving down towards the south side and such a hard shift over towards the north, they have free option to swing past on the top side of Everest. Maybe take North George or south. Instead, Alter Ego, they get a really clean push. Never mind. Doc with a three-man nade, now looking to finish the business. Oh, what a special nade coming through from Doc. I mean, we've seen them from him before, but this is a real clutch moment for it. Rosemary jumping out wide, the Molotov at his feet. Doc doesn't want to challenge just yet. Slipping around the edge. Oh, Still has two no. nades, and Rosemary maybe in danger here. A nade up top, but there's an off angle. Who's that chiming into the fight? I've no idea. I think it might even be 9Z, really far away. D plus maybe from the top of Everest. Rosemary has the nade. Not going to be able to land it though. The bouncer doesn't connect onto Doc, and he has a little bit of a moment to breathe. Rosemary needs to use it wisely. Will he get a teammate back or put more pressure onto Doc's position? I don't know if Doc even has meds left. Doesn't look like he does, but he's looking to push back in. Rosemary on the outside, floundering now, fumbling a little bit. The two top players from both the squads looking to finish what they started here. Alva gets flushed out. Doc Vinay looking to throw it upstairs. It would be perfect. It's just the 1v4 potentially. Will re-knock Snape? No! And Doc will be taken down. So the 1v3 was there. An insane grenade. I'm actually glad that Doc doesn't win that fight. I'm actually glad. Because I think that because they lose that fight, Doc might, you know, bring things back a little bit. Just a little. I mean, they get some points off the back, but again, like I was saying before, we had a three-man nade come through, which was just disgusting. It's absolutely scarpered any chance at Alter Ego catching up during this game. They're just making plays that they know are bad.
but they're hoping to ego challenge off the back of it, and I hate that. They're trying to be secret and unknown, sort of mysterious, and everyone's just OG ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ doing ਕੀ in a cape in the corner who's like chuckling to themselves, and they're like, stop that, and they're not getting any points for it. It's very awkward for APG. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ They really are an all-or-nothing squad at the moment. It's actually that they were able to do so well yesterday. And maybe it's that teams have downloaded them, right? Maybe they figured something out. ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ Next to each other on the tables as well, third and fourth. ਇਹ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ Close by to one another in the swamp. Camber had the first knock sent out their way. Maybe a second soon to follow. Seems like the Wolves are all too happy to clean this one out. See how much they can get done, and the answer is pretty much nothing. They fall very cleanly, actually, to the Wolves, who now have 8 elims on the game. Very good stuff. I mean, for the Wolves, they're starting to load up those points here and there. The Wolves are not battered down just yet. This team is still thriving where they can. Which is great to see. I think that they are not bruised. IC ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੰਪ ਮਾਰਨਗੇ ਉੱਪਰ They're still firmly on 2 feet here, standing tall. And for North America, ਨਹੀਂ IC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਕਿਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਪ ਵਾਲੀ 1 ਟੀਮ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ ਜੇ IC ਵਾਲੇ ਟੋਪ 2 ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਕਰ ਗਏ ਬਟ IC ਦਾ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਹੁਣ APG ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਸ ਆ ਹੁਣ AE ਤੇ IC ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ I think they're doing fairly consistently here over in Spain. Unfortunately, I just don't think it's enough going through from the Wolves just yet. They do still have chances though. They do still have. ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟਿਕਣਗੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ But are we getting bored of it? Goodness me. Well, we'll go for a third repeat on this zone. And at the moment, Falcons. Can they do something with this? Can they actually make it work? Because they did regroup onto that outpost. Managed to get all 4 there, which I find very surprising personally. It was a weird anchor point that they had. And then sort of a Hail Mary approach here. This is this Wolves fight between them and Tiamba. Very clean. I think they took 1 knock, I believe, during that. I'm not even sure they even took a single knock, but it was very nicely done. Wolves rotating through a pretty typical area. Unfortunately, they're not able to pick up the position they quite like, which is where Falcons are playing right now. You also have Papros Supermassive down towards Gakka, so this is kind of a difficult push now for the Wolves. They could send over towards the north side and try and hold out teams, but you already have loops here in a circle. I'd say this is one of those circles where a lot of prime real estate's already taken. If you want to get into the circle, you have to fight for it at this point. So likely going to see quite a few engagements. Personally, I don't think Team Secret has enough firepower to try and overtake any of these teams a single spot. And so I don't expect Team Secret to be living out too much longer. It's interesting that they were in this location so early on. One of the closest teams to it after that northern shift, but they're still getting cut out here. Gen G lose 1 on the approach. They're looking to divert and maybe find that south side of the hill. Are they going to crash into the further on compound towards OG? I mean, they are just going to draw short on the rocks here, it seems. Leave claws out. Wanting to not put all their eggs in one basket for 9Z. Kind of the opposite tune right now. He's going to spray down, and Gen G are going to lose 1. Can they protect him from that high ground? Do they have the angles to do so? Are Alter Ego going to get stuck in as well? Because they sit atop all of this, even though they only have 2 players. A lot of sightlines potential from the top of Everest. There we go. You got the old dominoes on Everest right now. You got D plus knocking into GS, knocking into Alter Ego, knocking into the circle, knocking down onto loops. This is probably the most packed I've seen Everest in a long time, and no one wants to fight for it at all. It's just allowing it to happen. I think everyone's worried that as soon as they take a fight with someone else, there's going to be an immediate response from the other side of Everest. Crazy.
Max was just एलिमिनेशन highlighting ले this लिया in our chat where अपना ना नहीं Alter Ego makes आहो this push over towards नहीं Everest is insane. एक एलिमिनेशन करके दिता खुद एलिमिनेशन है अच्छा मुझे करे कहने की चिकन है And Genji will be eliminated now. चिकन इतना कोई नहीं पीता है Stopped a little bit. So we'll see how चल एलिमिनेशन खेल तो देखे beneath them हाँ can जी approach on the points tallies. Because there are quite a मैं few क्या teams that are एलिमिनेशन तो किया definitely चल within एक striking distance, not least of which is Go. But rolling प्रथम up मैच लग to गया inner circle. They go 2 up on the fight immediately on the roll up. They're looking for that close range clutch factor. And they are delivering again blank. There is potential for Team Secret to try and third party this. But inner circle have already been pushed aside. And maybe Team Secret's time has run short on this approach third party. For Go, the late game, they are not closers, but what they are is incredibly good in the 4v4. I think if they can fix their late game rotates and how they plan out the rest of their game, they'd be a pretty phenomenal team. Right now, I think that their closing factor is just not quite there. But being able to win a fight like that versus IC so handedly really speaks volumes about this team. It's really impressive stuff in that firefight, you're right. Finally, the top of Everest going to start to pop off. D+ and GS going to loggerheads. It looks like GS are taking the majority of the damage. That is a bold peek, and Nolbu rightly puts him down there, but a close-range combat engagement from Esso maybe pushes him back behind the headland, but he's got the backup from his teammates, drops back down and around, needs to heal up, has 2 first aids, starts to pop लाओ out जी now वाले as 3 players from GS have fallen. Team वो ये Secret, लगे they're moving up as well. They might try and just roll over the top of this and amongst all the चेक chaos. किया There's not any full force नहीं teams in डीके action है just मैंने to लग गया वो go जी लगे towards Rosemary, but he's already stopped one of them. Also, the last player for GS in the meantime, who hop back on board with chips, they take him down. So D+ look to try and regain एक तो चिकन चाहिए यार मैं जो मर्जी हो जाए have joined the party as well. Rosemary and Snape are hopping वो around राजी on से top of बैठ the रहा है mountain. They are looking आईसी मुक गई है absolutely mental जैन here जी on भी the मुक on the गई है swivel, यही trying to jump around and find these shots चांस as है well. ना तो मैं This is getting तगड़ियां 3 टीमां ते खत्म हो absolutely गई हैं crazy on the mountain. आ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਤੇ I think the only ਇਹ reason ਬੜੇ this ਆਰਾਮ ਦੇ happens ਆ is because ਬਸ GS is the central Everest team, ਮੈਂ and ਤੇ GS does not want to buy a ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ single soul. GS is रोजमेरी और terrified. भी I मारते think GS was genuinely नहीं नहीं willing to नहीं हजे fight out जिंदे in है that position. It takes D+ to push ये them दोनों डिग on the जाना किते eastern edge. So again, it's हमें a दूजियां टीमां तो थोड़ा have to make this play. They have to make this play. It was their only फल option. किल हो वाले गया ने भी फाइट Currently, they're winning. गई They took a not फलक from दे सारे ही खा गए मैं सो earlier. नाइस Coops will go down. फलक That's from और ये OG टीम off नहीं है the वो जी distance. लेकिन Where's gonna 5 try and पॉइंट get a नाइस lovely little shot there. Coops can no longer hold this off angle for them. Oh, Falcons have loops crashed into them as well. They lose another player, so it's just Koa and Redox caught in the middle between the Wolves and Loops. But Papa Supermassive are on the outside, on the southwest side of it as well. You can see they're taking shots on the approach. A lot of damage done to everybody on the inside here. Wolves down to 1 player surviving, just Batten. Now trying to keep himself alive. These nades to keep people at bay. But Redox is flexing out, so is Koa. They're into the smoke with him. They look to try and take down the Wolves here and now, and they succeed. ये साला मोटा सोना के रहते हैं भाई पिछली बार भी नहीं 2 शॉटगन बड़े गंदे लाए इनने थोड़े ने हाँ इन्हें जिन्हें हुन मारना शॉटगन आगे फिनिश पे आया No reason to right now. I think they saw that fight was incredibly जना फाल्कन हुआ है no reason to get into it. Good nade, an immediate flush there from 9ZG over towards Alter Ego, but they get themselves an 8th place, you know, and a few elimination points. It's very surprising that they lived up there for that long anyway. D+ looking to dominate on the north side. You can see there not a huge amount of ammo on side. OG have a strong spot down towards the southeast, but now need to move. D+ gets very favored by the circle on this one, but they will have to deal with Go. ओ जी आले ओ कुछ कर दियो बहन दी सीरी अज कमाल 100% put the 10 पॉइंट हो ते 5-6 पॉइंट कितना जाएगा ना 6 25 ते 10 35 सीधा बहन जो 11वें नंबर पे बहन जाके I think sure on flat ground maybe, but I think D+ with the terrain advantage there with a couple of nades on board, that's going to make Goat's life really hard. But I don't think either of them will fight just yet. Allow these teams to fight beneath them. Happen. Absolutely crazy that OG have
not being able to extract more value than that first knockout towards Pmgc, and a tanky goes down as well. It is just WizGod trying to make things happen. AKOP as well on that flank, and maybe there is ये वाले भी a third खत्म हो party. गया It's रोजमेरी D+ वगैरह. who are chiming in, so Pamper Supermassive are on 2, but WizGod is so low. वो ला AKOP 2, बढ़ गए and they बहन do से get दो shut इन्हों दे. down. That's the shot that they were looking for. सारी टीम में बढ़ गई. Pamper Supermassive, and there is no way that they make that push work. Bro, Pmgc got 2 knocks on the approach out the window with a PPP zone. That's very surprising. I think if you're OG, I actually don't think you can be too mad at OG for that. That's incredible shots coming through from Pmgc on the roll up. ये ਹੁਣ मैच 14 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15वें ਤੇ आना 16वें ਦੇ. नहीं 15वें 16वें ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੀ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਦੇ ਜਮਾ ਹੀ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਸਾਲੇ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਝੱਟ ਹੀ. Their supplies are running a little bit low. Loops are very keen to get this one concluded though. All while D+ just taking shots down this way. But anything that moves, anything that breathes, finally a nade is connected. It's going to be the pickup. Rafinha splits the difference on the nade. He's going to get cut down there. And Loops pick up the points. Falcons down again in a position that they could have had a big game from yet again, but it's just not going to happen for them. 9Z lose one to Nolbu. On that top side of the mountain, Goat and D+ saving the fight between each other for the last. They will survive, most likely to be the top 3 here. The circle probably will shift away, but they'll try and extract as much value as they can. Maybe take if they're lucky. D+ right now is I understand they're trying to take shots over towards the players. ਟੋਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਭੈਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪ. 70 bullets left remaining. Their real focus needs to be ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਲਾਸਟੀਆਂ 2 ਫਾਈਟਾਂ ਲੈ ਲਓ. take whatever loot that they had on board and deal with what's on the south. ਆਹੋ ਲਾਸਟੀਆਂ 2 ਫਾਈਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. Crossing down towards the south side with Goat still being alive, and this fight needed ਉਹੀ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ. earlier. Position ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. Supermassive isn't going to take shots at you, but you have to do this now. And the fact that Go can just now roll away leaves D+ kind of high and dry. Loops. Oh, they've only had 2 players, but they're giving it a good go against Goat. The approach, though, very, very difficult. This southwest shift gives a lot of ground, and maybe Pamper Supermassive going to find another favourable fight on the back of it as well. Loops holding a little bit, doing the damage, though. The majority coming now through from Pamper Supermassive. Pmgc, the front man. He is an absolute star on the roster right now. Killer Joe looking to try and heal himself up to Go. In the meantime, D+ are descending. And 9Z cannot withstand them at all. A very clean roll-up. Very, very nice stuff. But they need to transition to the rest of this fight. Yeah, not a lot of expenditure there for D+ over towards 9Z, which is really good news. And they're going to get a quick reset on the util, on the ammo. You do have Chips still waiting behind, who has been kind of a dominant force when it comes to the long-range shots from D+. I'd be very happy to see a D+ win here. That sticky bomb could be ginormous from Pmgc. Oh, but he's hopping around. It's Tron B actually to connect the spray down, and he does find the flush with it. That sticky bomb works out. Knows there's a player now in the smoke. They know he's on the corner. The question is, what can they do with his presence as that final knock comes through? Pmgc is the one to put that 4v4 fight रह गई है ਹੁਣ देखा नहीं fight. Pamper Supermassive, who've been swinging around on the outside, doing so much. We're up to 8 elims. D+ on 9 though. They have been on that long-range engagement. Pamper Supermassive much more interested in getting up close and personal. I think if D+ are able to find the shots and the nade over towards Lost, very different story. Osel has to stay alive there. If you get rid of the off angle, it's game over for D+. But they need that. Osel just needs to stay quiet now. They know his position. Basically, he needs to assist when it's like the full-on 3v4 engagement. Up until then, basically, he's just an information provider for the team. This is cool, a full 4v4. Both teams are pretty warm as well. Have
have taken fights in the midst of all of this. I think Osal's going to look to back off. Knows his position is revealed. Good shots from Nico again, though. Consistently getting damage in. I mean, he couldn't really cover off the fight down the low ground if it were to pop off for Osal. I mean, especially with Kamikaze's angle that I'm imagining they should be aware of. It wouldn't be super easy for Osal to actually take shots down towards a fight if Papra Supermassive wanted to flank that low ground, lost that forward point that has really drawn Osal back down. And it looks like Papra Supermassive are gearing up for something. They're into formation now. Lost under a lot of pressure. Nolbu should spot him. Oh, okay, the headland's just there in time. I mean, that's frustrating. I mean, if he gets the nade over the top and gets the airburst on him, that actually makes their life so much easier. I think Lost is playing overly aggressive right now. That position he was playing there, if he gets taken down, it makes life so much easier for D+, especially with the circle shifting over towards the eastern side. Now, it is going to center up on the hillside, so this is a really quite interesting Zone 9, where it's pretty playable for both squads up until some of those final moments. Yeah, it's when that blue zone starts to close, players are going to have to move. The question is, who has to move first, and where are they going to go? I think for Papra Supermassive, they might actually have the better spot. With where Lost is playing right now, they are closer to the center, which is going to force D+ to move. But if they're forced to move into where Lost is, they might not have the sidelines to control players like Osal in their position. And Fabian, with a vehicle, could actually put a massive dent into this circle position, and he's going to go forwards. He's just scouting right now, trying to get information from inside the vehicle using the third-person perspective. But it is an interesting zone. Like I said, there's a lot of hard cover in this Zone 9. It's going to be a hectic ending, but a very fun one to watch. First time in a while where it's not just full-pitch warfare on the sidelines. This time you actually have angles, and you've got to use that utility to your advantage. Chip sets himself up, and Papra Supermassive kind of set themselves up in a lineup down towards the south side, beneath the hillside. Good nade, get some damage done, and more than anything, that's information gathered. Yeah, they know he's by that tree now. Chips steps up with that info, with the smokes covering him off, and now that's first blood drawn. Papra Supermassive at a disadvantage. But D+ have the center. A second knock is found. Will they be able to transition to Kamikaze? Nearly able to take him down, but just about staying alive. Dashes forwards, and he will go down next. Only the one player stands. It's all up to Nico, but he will not be able to do it. And it is D+ to keep things under control. The scouting goes well, and they flex out wide. Papra Supermassive had some standout plays there in that match, but it was not to be that they could go all the way. That is D+ Kia. I think for Papra Supermassive, they get completely ruined by Lost's position. He's just kind of so over-aggressive there on the front line. I think they probably should have put the line up across the north as opposed down towards the south side, because they're playing down the hill there. It's a little bit confusing. There's still some hard cover to work with. Overall, though, this is the best we've seen D+. Che team è lei? Già team hindi Superina Super Indera दूजा प्लेयर ही ना टीम टाइगर प्लेयर बड़ा गंदा खेले पिछले मैच में with Nolbu after just won the game. The guy looked like he'd just been यार बाकी टीमां जिन्नियां भी है ना ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ OG ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਠੰਡੇ ਮੱਠੇ ਜਿਹੇ ਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ OG ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ OG ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ That was terrible. There we go. Our previous champions finally get
the chicken dinner. Let's go. I mean, we talked about it earlier, Max, man, right? Which team do we think that you really wanted to see perform? You said D+, and they finally get the chicken dinner here. So happy to see it. By the way, I tried to give some respect to the Korean casters and try and all scream at the same time, but we failed. They're built different, unlike us. They're way too good. Next time. But a really strong play from D+ Kia, and we said it in the mid game, right, Nipchura? D+. Put them on top of Everest. Guess what? It is their bread and butter. They love that position so much. They know every nook and cranny of their area, and they played it to almost perfection. In particular, Chips. That guy was on an absolute tear this game. He would spot you. You would be down in like 3 to 4 seconds. Insane accuracy from this guy. Yeah, insane. I love watching him work. I mean, yesterday when the team wasn't really having a great day, he was the solo time and time again, getting them those placement points at least. So for him to come in, step up, get 7 eliminations, not only is he the solo master, he's the elimination master as well for this team. Hits that 1v3 at the end, almost gets the full squad wipe, but then we saw his teammate be able to finish it up for him. I mean, this couldn't have been at a better time, to be honest, right? We're now officially at that midway point for Group Green, right? So there's still a lot of more matches left to go the second half of the tournament, but we talked about it just like in the gauntlet stage, Max, man. That last day, last few games are just going to be so ridiculous. You need to get as many points as you can right here and now. Yeah, it's going to be the chase for the top 3 or trying to escape the red zone, the bottom 5, of course, place where you do not want to be as go through the recaps of this game. And a lot was happening from the get-go, and Wolves actually having a good engagement. Right onto reject on top of Tornado Sirens, able to take it out. But that nade from Doc of absolute beauty. He doesn't quite wrap it up, but oh my goodness, Doc he's him. He is him. He is him. He is back, he is him, and we're ready for it. He couldn't quite make it work for the whole team, but you know what? 1v3 knock is all we want to see to just give us a little bit of hope for maybe next game. But yeah, some really good stuff. Wolves had a great game. I mean, it would have been nice if they had been able to continue a little bit further into the game. I think there was a little bit of a hiccup there when they really went for that direct 1v4 or 4v4 push rather, but some really good eliminations to start off the game was really nice to see from them, and just the whole thing on Everest, man, was just crazy. Did you see that flick from Chip, by the way, over that rock with the F12K? He didn't break his wrist during that. What is that speed? That's unheard of. I know. Oh, wow, okay. Just crazy. That gyro, he did a full 180 in his chair, just like that. He's got that wrist workout to make sure he doesn't break something doing that, man. That's dangerous. You need to be a professional to pull that off. Holy. Goodness me. I will say shout out as well to Papada as well. Some really, really good stuff from Papada, like to just third party, get as much control of the zone as possible. I really liked how they used their nades as well, Max. Yeah. You just pulled a wahoo! That's how excited she is about these games. Okay, Oh, yeah. Mario is really hyped about this so far, this PMGC. Looking at the rotation for, of course, some of these teams, Tornado Siren taken over by Wolves. But look at that wide eastern rotate from Papara. Super massive plays here, taking it slow, making sure they get towards the circle. And D+ just sweeping the eastern side of Everest. So a lot of really top tier rotations. But the one we need to highlight here, Nipchura, look at Papara Supermassive plays. That push onto Orangutan could have been avoided. But unfortunately, the setup, the defense was not there, and Papara get the easiest. रेडियो की 4,500 की बाजिंग चल रही है 4.6. Yeah, the OG were just looking to the north. They were looking to the west. They completely forgot about the south side. They were not expecting Papada to do anything with it. And they went, hey, there's an opening over there. Let's go grab it. And they took it, and it got them a second place. अपनी क्यों नहीं चल रही है? OG. चलने वाला का बंदा मेरे साथ. इंटरनेट वगैरह ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੋਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ YouTube ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ D+ Kia, they are the team that loves Everest. They know how to play this. They've played it before. And here we go again. Just another example. चलो बंद कर दिए